Assalamu alaikum and Nazreen, welcome back to Raiders Park Sports Club here in Taunton Avenue in the heart of London. My name is Mahmood Mirza and I will be your commentator along with Mubarak Ahmed Saab, who will be here shortly. The weather here has turned rather overcast, and I suspect we may have a short delay before proceeding starts. The two teams are warming up in the far in the pitch, which is to the right hand side of us, and the two teams that are warming up on the right hand side are Umair 11 and England A. So that should be quite an interesting match with the two brothers from the UK competing against each other, as well as three or four former first-class Pakistani players from Pakistan. So the players are warming up, and as you can see, are holding a silent prayer and a final team meeting. They're all gathered round in a huddle in the corner there, and the two umpires are approaching them dressed in the red, as you can see as well. So it should be a fascinating afternoon's cricket. We're really delighted that you've joined us. The first match here this morning concluded with a victory for Jamia 11 versus Jamia UK, I should say, versus Sweden. Jamia scored 137 in their 20 overs, and in response, Sweden were bowled out for 48. So quite a low-scoring match. In the match on the right-hand side, the UK A team played Belgium, and the UK A team restricted the Belgians to 121 with 6 wickets down. In response, they got it with 15 overs, and Khalik Mirza scored 60 not out. Fazal Ahmed scored 40. The key bowlers were Shahzad, a young new quick bowler called Haris, and also bowling well was the skipper Khalid Zafar, as well as Ijaz Ahmed. Now, we're in the 7th year of this tournament, and for all of my Canadian followers who may be following us, we appreciate and we really respect the quality of the team that the Canadians bring. They've won this tournament 3 years out of 6, and so they are right up there as one of the favourites for this competition. They aren't at this ground today, but we will try and keep you posted on any of their results. Similarly, the USA team are here in strong, are here in strength, and they brought 2 teams out here as well. And Humayun Mirza, their captain, was very, very confident about putting up a good fight, was the words he used yesterday at Jummah prayers after I met him yesterday. The highlight of yesterday was a meeting with our beloved leader, Hazrat Mirza Masroor Ahmed, Ayyad Allah Ta'ala bin Nasr al-Aziz. May Allah grant him a long life. And it was really great to have an evening with him yesterday at Fazal Mosque in Putney. The 2 teams coming out on this particular ground are Sweden in the yellow kit and Belgium, who will be coming out shortly. But it sounds to me like in the other match the players are warming up. The UK team are going through their drills. Similarly, the Umair team are doing some stretches and some light catching for their players in the background there, if the cameras can pick it up. So just a short delay before proceedings start here. Now, for those of you who may have joined us for the first time, here for the first time, this tournament was started out in 2009, and the first winners were Canada, who I remember very clearly beat Germany in a very close match. Subsequently, Canada won it as well in 2010, in 2011, and then in 2012
2012, it was won by Canada again. In 2013, the United Kingdom won the tournament. And last year, although the UK team technically won, our beloved leader Hazur designated that pitch conditions were so bad that we had so much rain. The trophy would be shared 6 months between the UK team and the Canada team. So that was respected and adhered to, as always, by both captains. And we're just hoping that the weather, inshallah, we ask you for your prayers, that the weather this year is a lot better than it has been in previous years. So you can see the Swedish team going through their final preparations on the pitch. Rahman Saab, their captain, earlier kindly gave us an idea of the difficulties of some of the characteristics of Swedish cricket. They play on cement pitches. Um, they are the actual players live quite far away, but it's a real blessing for them to be here and to be taking part in this prestigious tournament. This really is a great cricket festival. We're going to see two of the big guns lining up on the pitch to the right of us as well. So we'll keep you updated, hopefully, inshallah, weather permitting, on both matches as we proceed. So the Belgium team have won the toss and decided to bat, and the Swedish players are just waiting for them to enter the pitch. And I'm delighted to say that my fellow commentator, Mubarak Ahmed Saab, has returned after a well-earned rest. We had a lovely lamb biryani here. For those of you who weren't with us, we enjoyed that. And after reading our prayers led by Maulana Munuruddin Chama Saab, we are now about to start this afternoon's proceedings. So, Mubarak Saab, would you like to give a quick introduction to the environment, the two teams now playing? अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह। आपकी खिदमत में दोबारा हाज़िर हैं हम और कोशिश करेंगे आपको ज़्यादा से ज़्यादा अपडेट करने के लिए। तो यहाँ अब जो मैचेस शुरू होने जा रहे हैं अनकरीब चंद लम्हों बाद, जो हमारे जो ग्राउंड हमारे करीब है बिल्कुल, जो आपको लाइव दिखा रहे हैं, उसमें मैच हो रहा है स्वीडन और बेल्जियम का, जो अभी कुछ लम्हों में शुरू होने वाला है। बेल्जियम की टीम आपको नज़र आ रही होगी ऑन द फील्ड बॉलिंग साइड पे। सो दूसरी ग्राउंड जो हमारे पास थोड़ा सा फासले पे है, वहाँ पे मैर 11 ममूसाब और के दरमियान मुकाबला होगा इंग्लैंड की जो मेन टीम है। हम क्योंकि हमारा जो सेटअप है वो थोड़ा वहाँ, तो हम उसको कवर नहीं कर पाएंगे, जिसके लिए हम बहुत माजरत ख्वाह हैं। और इंशाल्लाह आने वाले मैचेस में हम इन दोनों टीमों के मैचेस ज़रूर दिखाएंगे। बेल्जियम की टीम जो है वो उनके नंबर 11 नाम अगर स्ट्राइक साइड पे कौन है, अहमद जोया और वजीहुर रहमान ओपन करने जा रहे हैं। यार स्कोरर कोई भी नहीं है उनको।
We apologise for the delay in proceedings, but we're just getting the scorers in place. Apologise in the delay in proceedings, but we're just getting the scorers in place. Ahmed Saab looks an incredibly tall batsman and ideally suited for 2020 cricket. Let's see how he performs against the Swedish opening attack. So first ball, just short of a length, hits him on the thighs, and there is no run scored. So the field here set, currently you're only allowed 2 bowlers outside the circle in the first 8 overs, and we've got a third man, and then we've also got beg your pardon, we've got a third man and we've got a fine leg. So those are the 2 players who are outside the inner circle. In comes the Swedish bowler, bowls, and a bit of intent there, but an early wicket for Sweden, and sadly for Belgium, they've lost their first wicket after the 3rd ball. यहाँ अभी एक विकेट का नुकसान उठाना पड़ा बेल्जियम की टीम को। जोया साहब आउट होकर वापस आ गए हैं। पहले ही ओवर में बगैर किसी स्कोर के ये नुकसान उठाना पड़ा बेल्जियम की टीम को। So the new batsman is now going in, and just to let you know, in the second match, the UK team have won the toss and elected to bowl first, and Umair will be batting first. So genuinely, it's become very overcast here, and I would not be surprised if we have a light shower during the course of the afternoon. It was a beautiful morning this morning. We had the sun out, we had a lovely setting, and it's such a shame when the weather this way. Short length ball there, and slight misfield, but backed up quite well by the Swedish players. So a very good, productive first over for Sweden currently. They've had 4 dot balls and a wicket. But it's early days, and in 2020, as you know, within 1 or 2 overs, I'm sure the Belgium team will get their score up and running. That's a beautiful shot. Lovely cover drive, slight misfield, and it cost them two runs, possibly 3. Probably the right decision with hindsight, yeah. So the Belgium team are up and running with a beautiful cover drive. Last ball of the over. And that's played back to the bowler. So after the first over, the score is 2 runs with a fall of 1 wicket.
फरीद हैं बॉलर। दूसरा ओवर शुरू होने जा रहा है। फरीद स्वीडन से इनका ताल्लुक है, और अगर और कोई फरीद ये समझ रहा है कि मैं हूं तो वो स्वीडन से हैं तो फिर ठीक है। And there was a gentle joke there for our viewers. Our main manager here is Farid Dogasab, and the bowler is Farid as well. So just a light-hearted joke there. एक अच्छा शॉट, बहुत ही अच्छा शॉट ओवर द स्क्वायर लेग, इवन ओवर द कवर। ओह सॉरी, मैं समझा उस तरफ से मैंने बैटिंग एंडिंग देख लिया। So we're just making sure that I think my fellow commentator here has had too much lamb biryani in his lunch, and the ball viewers did go over square leg's head, but he thought it went over covers. Such a lovely setting here. Farid comes in. Let's see how he responds. And that is the leg side wide with an extra run. Like so, I can't begin to reiterate that when it's bowling, discipline is key. And I've seen from too many teams that just in the first few overs, a number of wides and extras. ये भी एक और वाइड आपने जैसे ही जिक्र किया और साथ ही इसमें एक और वाइड दे दिया। It's a fundamental part of 2020 cricket. It's called 2020 for 20 overs, and then quite often we end up seeing 23 or 24 overs. और एक और अपील और इसके साथ I felt really sorry for him, the batsman there, Mubarak Saab, because unfortunately I heard the click here. All right, and it's not so easy out there, but we don't have. बैट्समैन काफी अपसेट लग रहे हैं। उनका ख्याल है कि ये इनसाइड एज हुआ है, लेकिन बाज़ औक़ात नहीं पता चल सकता अंपायर्स को, और जज नहीं कर पाते, और बाज़ औक़ात जो है वो सिचुएशन इस किस्म की होती है कि बैट्समैन को भी गलतफहमी हो जाती है, तो इस तरह तो होता ही रहता है क्रिकेट में। Again, for our fellow competitors here, we don't have sneakometer. We don't have the luxury of having additional tools to be able to help these umpires. But I feel very sorry for that last batsman, and these sadly that was a clear inside edge. But the spirit of what that was played in, he accepted the umpire's decision and he took it as a true Ahmadi. It was a genuine mistake. तो बिल्कुल आपने देखा है ताहिर थे बैट्समैन, और उन्होंने बगैर किसी एहतजाज के और बगैर किसी आर्गुमेंट के वो वापस आ गए हैं अपनी पब्लिक में किसी भी बहस के बगैर, और यही है हमारा निज़ाम और यही है हमारी अतात। Tahir Saab, he may not be listening to this, but I tell you what, that was really good sportsmanship by his part, because clearly he was hard done, but as a true Ahmadi, he walked off and accepted the umpire's decision. So Dogar Saab is bowling well here. आपने उसको जबरदस्ती डोगर बनाने की कोशिश कर रहे हैं, वो पता नहीं, अगर उनको पता चलेगा तो आपको मारेंगे वो। मुबारक साहब, उनका नाम तो फरीद है, अल्हम्दुलिल्लाह, ठीक है, ये भी सही है, ये भी मुनासिब है, सही बात करा रहे हैं। So in comes Farid and finishes what was a productive over for them. Just the 7 runs off the over, but a vital wicket. So an update on the score. The score is 21 runs for the. I'm just being corrected. We're going to
update the score for us? I will give our viewers an update, and just to let you know, in the other match as well, Umair 11 have just lost their first, and the batsman was given out caught behind. So the score is 10 runs for the loss of 2 wickets after 2 overs. Now that was a complete surprise ball. It just shot up, from a good length. Mubarak Saab, good bowling. Bowling round the wicket. बॉल्ड कर दिया है इस बॉल पे And Rahman Saab, the skipper, बैट्समैन को अभी भी यकीन नहीं हो रहा कि मेरी डेप्थ जो है वो पीछे से गायब हो चुकी हैं लेकिन अनफॉर्चुनेटली वो आउट हो चुके हैं that was a perfect ball. Just clipped the top of off stump, and surprised me. So Belgium now have lost 3 wickets for the loss of, for 10 runs, and it's in the second over. Yeah. Sweden or Belgium? Belgium are batting, Sweden are bowling. स्कोर 10 रन और 2 विकेट 3 wickets. 3 wickets. विकेट्स और 2 ओवर मुकम्मल हो चुके हैं तीसरे ओवर का खेल जारी है आगे कौन है बैटिंग वाला कितने बैट्समैन So Rahman Saab, the skipper, bowling. And he seems to be bowling a good length and line here. Just a bit of outswing. एक और अपील The biggest challenge of bowling round the wicket is that it's very hard to get an LBW. And if he wants to get a good, because of the angle, it's very difficult to get an LBW. बिल्कुल जब तक आप सीम और एक अच्छा कट शॉट स्लिप के दरमियान से 4 रन के लिए बहुत ही अच्छा शॉट खेला है ये थोड़ा सा आई रहा बॉल शॉर्ट पिच बॉल था उसको बड़े अच्छे तरीके से मैनेज किया और अपने लिए 4 रन हासिल किए अपनी टीम के लिए 4 रन हासिल किए So that was a late cut by the Belgian batsman, and it was the first boundary of this match. Second boundary. I'm corrected. Thank you. In comes Rahman. And a repeat of the previous shot. एक और कट शॉट लेकिन इस दफा फील्डर कामयाब रहे बाउंड्री And despite the misfield, that was only 2 runs. So at the end of the over, let the scorers update the score. So what's the score, please?
The score after 3 overs is 16 for the loss of 3 wickets. Dr. Farid Saab actually now bowls really well, and I'm getting mistaken here with our chief manager here, who has the same name as Farid. Yep, the bowling bowler. Short of length. So the weather seems to be improving. The dark clouds that were threatening to bring in rain, thankfully, have kept away. And it seems to be a bit. या काफ़ी बादल गहरे होते जा रहे हैं और हवा भी काफ़ी ठंडी हो चुकी है। चौथे ओवर का खेल जारी है। 18 स्कोर है। 3 विकेट के नुकसान पर बेल्जियम की जो ने जब अपनी बैटिंग शुरू की तो पहले ही ओवर में उनको नुकसान उठाना पड़ा अपने ओपनर के आउट होने की सूरत में। और स्क्वायर लेग, डीप स्क्वायर लेग की तरफ खेल दिया है। इसको थोड़ा सा संभल हुआ बॉल फील्डर से, लेकिन उसका फायदा नहीं उठा सके बैट्समैन। एक ही स्कोर बन पाया। Just as I spoke, right as I spoke, we're seeing a bit of a drizzle, which is rather sad. और डाउन द लेग साइड अंपायर का इशारा। 4 रन और 22 के 4 स्कोर। 5 किए हैं इस बॉल पे। बेल्जियम की टीम ने जो फ्री मिले हैं उनको, बगैर किसी मेहनत के, बॉलर की अपनी मेहनत, अपना ही नुकसान। I think teams that focus on discipline and bowling in good areas will benefit vastly. When you're bowling down the leg side like that, not only is it 4 and an extra of the run, but then you have to bowl an extra ball, and it really does hurt the fielding side quite badly. काफ़ी बड़ी हुई घास थी जहाँ बॉल चली गई थी और बॉल वापस मिल गई है। ढूंढने में थोड़ी सी देर हुई। अच्छा शॉट और आउट होने का खतरा, लेकिन बड़ा तेजी से ये रन मुकम्मल किया। And on the other pitch, Malik Sab, I just witnessed another Farid, but this time he is Dogar, the left-hand batsman for Umair 11, hitting Ijaz. मैं भी देख रहा हूँ। नसीसा
अच्छी शॉट, बहुत ही अच्छा प्लेस किया इस बॉल को, थोड़ा सा बैकफुट ने पॉइंट के दरमियान से निकाल दिया, गैप के अंदर बॉल, और 4 स्कोर हासिल किए हैं अपनी टीम के लिए बेल्जियम के बैट्समैन ने। वाइड बॉल काफी बाहर था लेग स्टंप से, और कीपर ने ट्राई भी नहीं की, इतना बॉल बाहर था, और थर्ड मैन की पोजीशन पे फील्ड हुआ, स्क्वायर लेग की पोजीशन पे, ये डीप स्क्वायर लेग की पोजीशन पे फील्डर ने बॉल वापस किया, 1 स्कोर हासिल किया और 1 वाइड का मिला। एक्स्ट्रास काफी मिल रहे हैं मोस्ट साहब इनको। बिल्कुल। अच्छी बॉल, शॉर्ट पिच डिलीवरी, रिजवान है बॉलर इस वक्त जो कैप्टन है स्पेन के, अच्छी बॉलिंग का मुजाहरा उनकी तरफ से, शॉर्ट पिच बॉल था, मिडिल स्टंप पे उसको बीट किया बैट्समैन ने, किसी रन का इजाफा नहीं कर पाए रिजवान एक दफा फिर, और गुड लेंथ बॉल, उसका भरपूर फायदा उठाया है बैट्समैन ने, मिडिल ऑफ द बैट इसको उठाया और गेंद बाउंड्री लेंथ से बाहर, लॉन्ग ऑफ और लॉन्ग ऑन की पोजीशन पे, बहुत अच्छा 6 छक्का मारा है, थोड़ा सा आगे गिरा बॉल, उसको भरपूर अंदाज से उन्होंने खेल दिया बगैर किसी हिचकिचाहट से। और एक दफा पिच किया बॉल लेग साइड पे, वाइट बॉल का इशारा अंपायर जावेद का, रन लेना चाहते हैं, स्लिप हुए और बड़ी स्ट्रगल करनी पड़ी इनको वापस आने के लिए क्रीज में, मिसअंडरस्टैंडिंग दोनों बैट्समैनों के दरमियान। साहब यही मैं आपको सुबह बता रहा था कि असल में मसला ये है कि उन्होंने ग्राउंड का एक्सपीरियंस नहीं और उनको अंदाजा भी नहीं था कि इतनी हम वहाँ पे स्लीपर जो है वो होगा ग्राउंड्स के अंदर, और उन्होंने स्पाइक का अरेंज नहीं किया अपने लिए क्योंकि उनको पता नहीं था इस बात का। इंशाल्लाह नेक्स्ट ईयर उनको जो है इस बात का अंदाजा हो गया है और वो जरूर लेके आएंगे। 37 है मजबूरी स्कोर बेल्जियम का, 37 स्कोर है, 38 स्कोर है, और 5 ओवर का खेल जो है वो मुकम्मल हो चुका है। So the score is 38 for the loss of 3 wickets, 5 overs.
अच्छा बॉल था, ऑफ स्टंप पे पिच हुआ, थोड़ा सा गुड लेंथ पे बॉल था ये, बैट्समैन उसको समझ नहीं पाए, बीट हुए सीधा कीपर के हाथ में। एक और मिस फील्ड यहाँ पे, 2 स्कोर हासिल किए हैं अपनी टीम के लिए। अंपायर 11 की तरफ से अच्छी बैटिंग का मुजाहरा हो रहा है दूसरी ग्राउंड में। इंग्लैंड फील्डिंग कर रही है इस वक्त दूसरी ग्राउंड में। अंपायर 11 जो है वो बैटिंग पे है। एक और वाइड बॉल स्वीडन की तरफ से, डीप स्क्वायर लेग के फील्डर ने गेंद को फील्ड किया वापस कीपर के पास। लेग स्टैम्प पे पड़ी हुई बॉल को स्क्वायर कट किया है, 2 स्कोर हासिल किए हैं अपनी टीम के लिए। अर्ली विकेट गिरने के बाद बड़ी जिम्मेदारी से ये दोनों बैट्समैन अपनी टीम के लिए खेल रहे हैं। कोई भी गलती करना नहीं चाह रहे, कर रहे हैं जो बॉल आ रही है उसको उसी तरह खेल रहे हैं। कोई भी शॉट बनाकर स्ट्रगल करके उसको नहीं मारने की कोशिश कर रहे, क्योंकि उनको पता है कि हमारी कुछ विकेटें गिर चुकी हैं और अगर हम कोई भी इसकी शॉट खेलेंगे तो हमारी टीम के लिए नुकसान होगा। तो अगर हम 20 ओवर खेलते हैं तो कुछ ना कुछ आएगा, ना आने से बेहतर है कुछ ना कुछ आए। Score has progressed quite well. It is 48 for in the 6th over with the loss of 3 wickets, and the Belgium team have consolidated from where they were precariously placed when they were initially 3 wickets down for 15 runs. So quite a good partnership developing here between these two players, with some nice shots. And we have a new bowler now bowling for Sweden. The score, I've just been told, is 49 of 6 overs. The new bowler now is Nadeem. He's bowling left arm, it looks like, over the wicket. And the fielding restrictions have now been lifted. We have 4 players outside the circle. और बॉल कर दिया इस दफा, यॉर्क बॉल थी, बिल्कुल बैट्समैन उसको समझ नहीं पाए और तीनों बेल्स हवा में लहरा गई। पहले बॉल इस ओवर की पहली बॉल पे उन्होंने बॉल किया और कैप्टन हैं जो आउट होकर पब्लिक में वापस आए हैं।
So great start to the over. Beautiful Yorker, knocked out off stump, and the Belgium captain comes out having consolidated the innings that was precariously placed at 12 for 3. So in the previous game we saw the Swedish team all out for 48, and that second ball looks a big wide. So after such a good first ball, the second ball was wide, and he comes in to bowl the third ball. And that was quite a good ball, swinging away. The batsman played and missed. That was a lot better. अच्छी बॉल दफाई अंदाज में खेला, उसको बॉलर ने खुद ही फील्ड किया इस बॉल को। सातवें ओवर का खेल जारी है, 50 का मजमूई स्कोर है बेल्जियम का, और स्क्वायर लेग की तरफ गिरा है इसको। फील्डर गेंद के पीछे, पांव से गेंद रोका, फिर पांव फिसला, दोबारा वापस मुड़े और गेंद उठाई। इस सरसना में 2 स्कोर हासिल किए हैं बैट्समैन ने। 52 52 के स्कोर के ऊपर चले गए, और 7वां ओवर इस वक्त चल रहा है। नदीम है बॉलर, ट्रेन ट्रैक एंड की तरफ से। So that was quite a precarious stop there with his legs and his foot, and it just shows you how slippery the ground can get when it rains here. So Arif just hit the shot, beautiful shot, nobody backing up, and he'll pick up an extra run for that. So Arif picks up 3. And batting now is Fakhir Saab with the white pads and number 15 on his back. So Nadeem coming to complete his over. So a nice shot there, just backward of point, and the 2 runs for the batsman. So the umpire is just checking the bowlers follow through, and just having a quick conversation with his fellow umpire. So the score is 62 after 7 overs for the loss of 4 wickets. बासठ का मजमूई स्कोर है बेल्जियम का, और 62 का स्कोर। 7 ओवर का खेल मुकम्मल हो चुका है। 4 विकेट खो चुका है बेल्जियम इस वक्त। लास्ट विकेट जो आउट हुए हैं कैप्टन हैं उनके, बेल्जियम की टीम के कैप्टन अब्दुल आला, जो आखिरी विकेट
और अनइवन बाउंस मुसाब रहा इस दफा इस बॉल पे, समझ नहीं पाए बैट्समैन, उसका मुबारक है गालिबन बैट्समैन आरिफ आरिफ अरशद हैं बॉलर। ऑफ स्टंप पे पड़ी हुई इस बॉल को खेलना चाहते थे पॉइंट की जानब, बीट हुए और विकेट कीपर भी बीट हुए, 2 स्कोर हासिल किए हैं तेजी से। अच्छी रनिंग बिटवीन द विकेट। बॉलर आए बॉल की मिडल सेंटर बॉल, लेग स्टंप पे पड़ी हुई इस बॉल को एक स्कोर के लिए खेला है और एक ही स्कोर बना। So just to give our viewers an update on the other match, we've just seen Harris being hit for a massive 6 by the Umair team. And back to this match. Another wide, I believe, and signal by the umpire. So in the other match, it looks as though Umair are doing incredibly well. They've got off to a really good start after the loss of the first wicket. And that's another shot, just deep square leg. That's a beautiful shot and well stopped. He saved 4 runs there. That was a very good stop. Lovely square cut. The weather definitely is improving. It's a lot more upbeat. There's a lot more less cloud. Still a bit of a nip in the air as the bowler bowls, and now that the fielding restrictions have been lifted, there's plenty of singles there to take. But something else which was quite noticeable in the World Cup was that a lot of the teams put in attacking fielders at first Climax gully to put a lot of pressure on batsmen. And so we haven't seen much of that. As soon as the fielding restrictions are lifted, it was very noticeable that in the recent World Cup, Brendan McMullen of Australia put a lot of emphasis on having 2 slips in the gully, despite it being a limited overs match. And we haven't seen those kind of attacking field placements in this tournament to date. So the score is 68 off 7 overs for the loss of 4 wickets. I've just been told it is 8 overs. And we've got Fareed Saab back on. This is the 9th over starting. Good Yorker length delivery there, clipped to mid-wicket, and just the 1 run.
Farid bowled really one. The batsman's backed up quite a long way from the other side, but he gets back without any due concern. In comes Farid, bowls, and a beautiful shot. You should get 2 for this quite easily, and gets back comfortably. That brings up the score to 71, and this is the 9th over. Another leg side wide, and Mubarak's up again. The discipline is just not there. हाँ जी, असल में काफ़ी ज़्यादा मैचेस खेले हैं इन लोगों ने और थकावट भी काफ़ी हो चुकी है। एक और वाइड बॉल, बहत्तर का मजमूई स्कोर है। 9 ओवर का खेल मुकम्मल हो चुका है और बहुत ही अच्छा स्क्वायर लेग पे खेला है, एक स्कोर हासिल किया। So clipped off his leg, down to fine leg. So missed out on that opportunity. And the score is so the score is 75 runs after 9 overs with a loss to 4 wickets. जज़ाकल्लाह साहब, यहाँ जो दूसरा मैच इंग्लैंड और अमेर 11 के बीच चल रहा है, 2 विकेट खोए हैं अमेर 11 ने वहाँ पे और उनका स्कोर है 49। 49 स्कोर उन्होंने बनाया। 7 ओवर का खेल उनका मुकम्मल हो चुका है, 8वां ओवर जारी है और गिरफ्त मजबूत लग रही है इंग्लैंड की अमेर 11 पे, क्योंकि 7 ओवर के बाद 49 स्कोर को इतना बड़ा स्कोर महमूद साहब लग नहीं रहा। 2 विकेट, अच्छे विकेट उनके वो गंवा चुके हैं। आप देखें आगे क्या बनता है। So for me, 2020 can change very quickly, and that pitch over there is not got the bounce that this genuine pitch that we have over here. So I think anything above 100 is a good score, and cricket is a funny game. It can change very, very quickly. But coming back to this match, it's 76 for 9, and we have Nadeem bowling, and bowls it with the batsman off his back foot, places it to mid-off, where it's picked up for a single. So Belgium have done incredibly well here. They were precariously placed
at 15 for the loss of 3 wickets, and they've recovered to 77 for the loss of 4 wickets of 9 overs. Nadeem coming in to bowl, and he bowls, and a missed opportunity there by the batsman because it was well outside the off stump. Could have actually been driven through cover or through extra. The two batsmen have a quick word. In comes Nadeem. Bowls, and that was beautifully placed between the two fielders. Lovely cricket shot for an easy 2. And there's overthrows as well. So 3 runs there. Nadeem must be disappointed because it was a good ball, and unfortunately, due to the overthrows, it's cost him 3 runs. In comes Nadeem from the tennis side of the ground. And that's another wide, Mubarak sir. So I think wides have cost them another 2 overs, and we are now already only in the 10th over. Yeah, so already 2 extra overs to bowl. जी बिल्कुल क्या है, जो एक्स्ट्राज होते हैं वो बहुत ही महंगा पड़ते हैं आखिर पे आके। एक कॉर बिहाइंड की अपील थी, लेकिन अंपायर मुबारक साहब हैं वहाँ पे, वो खामोश रहे, कोई रिस्पांस नहीं। एक बार फिर लेग स्टंप से बाहर बॉल और वाइड बॉल का इशारा अंपायर का। अच्छा कट शॉट गई और स्लेब के दरमियान में से, लेकिन फील्डर वहां मौजूद हैं। एक स्कोर ही बन पाएगा और एक ही स्कोर बना। कीपर गालबन चेंज हो रहा है, यहाँ पे कीपर चेंज किया जा रहा है स्वीडन की तरफ से। 82 का मजबूरी स्कोर है, 10 ओवर का खेल मुकम्मल हो चुका है। पहली विकेट जल्दी गिर जाने के बाद काफी लग रहा था कि बेल्जियम की टीम जो है वो इतना स्कोर कर नहीं पाएगी, लेकिन बहुत ही अच्छा मैनेज किया, कैप्टन ने भी अच्छी इनिंग खेली, लेकिन उसके बाद बेल्जियम की टीम दोबारा वापस आई और उसने बड़े इनामात से और एतमाद के साथ बैटिंग शुरू की और अपने स्कोर को काफी आगे बढ़ा लिया है। इस वक्त 82 स्कोर है और 10 ओवर मुकम्मल हो चुके हैं। काफी अच्छा स्कोर जो है वो ले गए हैं बेल्जियम वाले और 10 ओवर अभी बाकी हैं। चार विकेट जो है उसके ऊपर 82 स्कोर नॉट बैड।
So as we have a break in the proceedings after 10 overs here, I've kept a close eye out on the Omer match versus the England team, and that seems to be brewing up quite nicely. It's well evenly balanced. We're waiting for a score update, but from what I've seen, Butt is bowling there, and the left-hander clipped it off his legs for a single. So as they say, they are just keeping the scoreboard ticking over, and every single run is precious in any match. मेयर 11 ने अब तक 60 रन किए हैं वहां पे और 9 ओवर का खेल मुकम्मल हो चुका है। 10वां ओवर जारी है, 2 विकेट के नुकसान के ऊपर वो खेल रहे हैं मेयर 11। दोनों टीमें काफी स्ट्रांग हैं। अब कुछ भी नहीं कह सकते कि कौन सी टीम किस वक्त गेम को किस तरफ मैच को ले जाए। हर ओवर हर बॉल पे वहां जो है मैच की सूरत हाल तब्दील होने की का अंदेशा है, लगता है रहेगा, क्योंकि दोनों टीमों में ऐसे प्लेयर मौजूद हैं कि वो अपनी टीम के लिए मैच का पासा पलट सकते हैं किसी भी बॉल पर। So the score for our viewers tuning in for the match between Omer and England. Omer are placed at 60 for 2 after 9 overs, and are looking quite promising in their attack. And Butt bowls in again, and the hit ball is hit back to deeper backward point for another single. Rizwan will, the captain, will continue in the 11th over. So Rizwan coming in, skipper, who spoke to us earlier on. And a beautiful shot there. He hit that. That was right on his pitched, very short pitch, and looked as though it was going to hit him on the helmet, but he managed to get the bat in the way and hooked it down to fine leg for a 4. So that really was a lovely shot from a very, very precarious ball. को जो बॉल शार्ट पिच ममोसा मिल रही है ऑफ स्टंप पे, उसको बड़ा अच्छा कट शॉट मारते हैं वो, और गली और पॉइंट के दरमियान में से जो है वो खेलने की कोशिश करते हैं, और उन्होंने काफ़ी जो है बाउंड्रीज हासिल की हैं, 3-4 बाउंड्रीज उन्होंने ली हैं यहाँ पे एक ही जगह पे। लेकिन इस वक्त आप देख रहे हैं कि डीप वाले पे उन्होंने एक फील्डर प्लेस किया है पार्क के लिए स्पेशली। ऑफ स्टंप के बाहर बॉल थी ये, और इसको जाने दिया कीपर के पास, कोई रिस्क नहीं लिया इस बॉल पे। So for the benefit of our viewers, at the moment we've got a deep mid off, we've got a deep mid wicket, we've got a deep point as Rizwan bowls again, short of a length, and finally we've got a deep fine leg. So those are the 4 fielders that are outside the circle. The score is 86, 10 overs for the loss of 4 wickets. 87 now.
Rizwan bowling a good line and length there. He's bowling it just short of a length, and it's very hard to get away on a good line as well. So Rizwan comes in around the wicket, and I find that really strange, because of two things. One, because of the wide, and secondly, you're reducing significantly the chance of you getting an LBW. What do you think? मेरा ख्याल है बॉलर इस वक्त मुझे नहीं समझ आ रही जो स्ट्रेटजी इनकी है वो ज़्यादा कॉन्सेंट्रेट कर रहे हैं शॉर्ट पिच के ऊपर, ये देखें, और लेग पे ज़्यादा बॉल प्लेस करने की पता नहीं हो रही है या कर रहे हैं। बहरहाल ज़्यादा जो है वो लेग साइड पे अटैक उनका है इस वक्त बॉलर का। इस वक्त वो जो बैटिंग कर रहे हैं दूसरी ग्राउंड में 60 रन स्कोर की है। 10 ओवर का स्कोर ओवर का खेल मुकम्मल हुआ है इंग्लैंड की टीम की तरफ से, और मेयर 11 ने बनाए हैं 65 स्कोर। स्टिल 2 विकेट उन नुकसान पे। That for me is a good start, and it's a good platform to build upon with only 2 wickets down. That's a beautiful shot from the Belgian player. Hit through cover. The ball was short, and in fairness, Ashir hasn't bowled very well. He's bowled the ball either wide or he's been consistently short, and really got what it deserved. Yeah, it was short and wide, and a beautiful square cut through the covers. But again, like I point out to you, without studs, it's very difficult. You have no idea how difficult it is to play on these surfaces without studs. ग्रिप बहुत ज़रूरी है आपके पाँव की, जब आप बॉलिंग कर रहे हैं, जब तक आपके पाँव की ग्रिप नहीं होगी नीचे, और आप कैसे उसको मैनेज नहीं कर पाएंगे किसी तरह भी। But he's young, he'll learn, and inshallah he'll come back a much better improved cricketer next year. So it's all a learning process for these youngsters. So in comes Archer, he bowls. Again white ball. And again white ball. The other match, Khalid Zafar has just picked up one of the key wickets, put at deep mid-wicket. And in this match, we nearly had another run out. So Mayor have just lost another wicket. With Khalid Zafar coming on and picking up a key wicket. The score here is 100 up. So a century for the Belgium team. And that was a lovely shot off the back foot to get extra cover. In comes Usher, he bowls. And that was a good ball. That was a good ball, pitched on a good length, and they just missed the outside edge of the bat. But he has got all the attributes of a good bowler. He's tall, he's got a good run-up, and being quite young, he will learn from his experiences.
Here comes Arshad bowls. That's a good ball, but I think too high, and quite correctly, the umpire will signal a leg bye, I believe. No, he must have got an edge to it, so a single to the batsman there. In comes Arshad. And there's the young blood in him, as you can see, as he picks up the ball. He's obviously had 3 shredded wheats this morning, and his Red Bull as well. तीन विकेट खो दिए हैं मेरा 11 ने वहां पे दूसरी ग्राउंड में, और इंग्लैंड की टीम खेल रही है अगेंस्ट मेरा 11। 76 के मजमूई स्कोर पे मेरा 11 इस वक्त स्टैंड अप है, और 11 ओवर का खेल वहां मुकम्मल हो चुका है। अभी खालिद जफर ने तीसरी विकेट जो है वो हासिल की है वहां पे। So the score is 102. The score is 102 after 12 overs, and the new bowler is Zishan. And Khalid Zafar's just taken another wicket with a great stumping by Mohammad Qasser. So Amir are beginning to struggle a bit now. They've lost, and we'll get an update for you as soon as we can. नाज़रीन, मसरूर क्रिकेट टूर्नामेंट का जो दूसरा मैच यहाँ पे हो रहा है उसमें मेरा 11 इंग्लैंड के खिलाफ 78 रन पे चौथी विकेट खो चुका है, और 12 ओवर का स्कोर जो 12 ओवर का जो है खेल अजीज मिट्टू जो है वो गए हैं बैटिंग पे नंबर 5 पे। मेरा 11 की तरफ से अजीज मिट्टू खेल रहे हैं इस दफा। हो गया।
लेफ्ट फुट पे जाके पॉइंट और गली के दरमियान खेला। एक स्कोर हासिल किया है बेल्जियम के बैट्समैन ने अपनी टीम के लिए। दूसरे रन के लिए जल्दी करनी पड़ेगी, लेकिन जितनी जल्दी बैट्समैन ने की है उतनी जल्दी फील्डर की होती तो शायद ये नुकसानदेह साबित होता। तस्वीर बंद कर रहा था। अच्छी स्ट्रेटजी अपनाई है बेल्जियम की टीम ने, सिंगल को ज्यादा वो अहमियत दे रहे हैं और जो बॉल लूज मिलता है, बैट पे मिलता है, उसको भरपूर तरीके से एंजॉय करते हैं और खेलते हैं और अपना बाउंड्री हासिल करते हैं। इसी वजह अर्ली विकेट गिरने के बावजूद उन्होंने अपनी इनिंग को बहुत ही मेंटेन किया और स्कोर को लेकर चले और अब उनका जो स्कोर है 108, 13 ओवर का खेल जो है वो मुकम्मल हो चुका है। यहाँ पे चार विकेट नुकसान हुआ है बेल्जियम को। पहले ही ओवर में इनको ओपनर जो है वो आउट होकर वापस आ गए। जल्दी थी उनको, शायद थके हुए लग रहे थे। मेरे पास ही बैठे हुए हैं, वो मुस्कुरा रहे हैं अब। अच्छा शॉट मिड ऑन की तरफ खेल, लेकिन बल्ले का अंदरूनी किनारा लेते हुए दो स्कोर किए हैं बेल्जियम की बैट्समैन ने फाइन लेग की तरफ। लेग स्टंप पे बॉल थी, वाइड बॉल का इशारा अंपायर की जानब से और एक स्कोर उन्होंने लिया भाज के और दो स्कोर टोटल हो गए। So for our Punjabi listeners there, Bajge means very quickly. He likes that square cut, it's his favourite shot, and he plays it well. He's batting very well, the Belgian team. They've recovered really well here. They were 15 for 3, and they're at 115 in the 14th over now. Full toss, nicely placed between the two fielders. A bit of football there from Zlatan Ibrahimovic, the Swedish cricketer stroke footballer, and they picked up 2 runs for that. Zakala मैर-11 इस वक्त 80 के स्कोर पे है। 13 ओवर का खेल वहां मुकम्मल हो चुका है इंग्लैंड के खिलाफ और 4 विकेट खो चुका है मैर-11, 4 विकेट खो चुका है बेल्जियम। 109 स्कोर है, एक स्कोर है बेल्जियम का इस वक्त। और एक दफा फिर फाइनल की तरफ खेला है। एक स्कोर, दूसरा स्कोर के लिए जल्दी करनी पड़ेगी, लेकिन जल्दी की जरूरत नहीं है क्योंकि उनको शायद पता चल गया कि जल्दी कर रहे तो हमें भी कोई जरूरत नहीं है जल्दी करने की। आराम से वो 2 के हैं
फाइन लेग की पोजीशन पे फील्डर फुल टॉस ऑफ से काफी बाहर, बैट्समैन ने कोई को खेलने के लिए, और नो बॉल दिया है। पहले वाइड का इशारा था, लेकिन अब लेग अंपायर की तरफ से है, क्योंकि नो बॉल इसलिए दी गई है कि फील्डर्स जो हैं वो दायरे से चार फील्डर दायरे के अंदर नहीं थे, और अंपायर का इशारा, वाइड बॉल तो ऑलरेडी थी ही, लेकिन नो बॉल भी हो गई। स्कोर तो बहरहाल एक ही होगा, और वो बेशक नो बॉल में काउंट कर लें या वाइड बॉल में काउंट कर लें। एटी सिक्स मैर 11 का स्कोर है इस वक्त। 14 ओवर का खेल मुकम्मल हो चुका है इंग्लैंड और मैर 11 के बीच में। 4 विकेट स्टिल उनकी डाउन है। एक दफा फिर वाइड बॉल, अंपायर का इशारा देखना पड़ेगा, ये ब्रश किया है या लेग बाई का है या प्लेड हुआ है, इशारा देखना पड़ेगा, और अंपायर का इशारा के सीधा ही बाई। दो स्कोर बाई के और एक वाइड नहीं दिया। And in the other match, we've 14 overs are completed, 122 for the loss of 4 wickets, as the batsman has a. In the other match, I've just seen Shalakir being hit for a massive 6 over mid wicket. So we'll keep you posted on the score. The last we had there is now 93. It's no, he hit a 6 as well, which I saw. So he hit a 6, which was 93 in 14.4 overs. Shakir bowls, and again Mittu hits it to mid-off for a single. So as I pointed out to you, Mubarak Saab, anything over 100 is a good score on that pitch. And they're already at 93. So that is going to be a very, very close match, rest assured. The score is 122 here for Belgium after 14 overs, 4 wickets. स्टंप आउट कैसर ने किया है मिठू को, अजीज मिठू को। कैसर थे विकेट कीपर इस दफा इंग्लैंड की तरफ से। उन्होंने बेल्स उड़ा दी है मिठू की। हार्ड को बड़ी शॉट खेलने जा रहे थे, और कैसर चूंकि बड़े ही मंझे विकेट कीपर हैं और उन्होंने कोई गलती नहीं की, और मिठू की विकेट जो है वो उड़ा दी। चलो
This bowler is mixing his bowling up quite. He's bowling a few leggies and he's bowling a few off breaks as well. So let's see what he does with this one. That's an off break. The previous ball was a leg break. And no matter what he bowls, that was hit beautifully through cover for 4 runs. But quite an interesting variety of bowling from his. Normally, a bowler tends to bowl either leg break or off break, but this bowler seems to want to mix both up. Yeah, and it was working well for him for the first 4 balls, but that last ball got punished and deserved what it got, which was a beautiful shot to through cover for 4. And there we see the reverse sweep. Nearly proved dividends for him, but the fielder did a really good stop at Gully. So the score is 129 off 15 overs for the loss of 4 wickets. और एक उठता हुआ शॉट बॉलर के ऊपर से, कोई फील्डर मौजूद नहीं है वहां पे। 4 रन हासिल किए हैं अपनी टीम के लिए। गुड लक पे बॉल पड़ी थी, ये उसको भरपूर एंजॉय किया है बैट्समैन ने। खेल दिया ओवरहेड द बॉलर। अठानवे का स्कोर है। मैरलेवन इस वक्त जो खेल रही है, 16 ओवर खत्म हो चुके हैं, 5 विकेट उनके गिर चुके हैं मैरलेवन के इंग्लैंड के खिलाफ। कच्चा शॉट, लेकिन फील्डर के हाथ से बॉल टच हुआ और एक स्कोर बन पाया।
एक और उठता हुआ शॉट, फील्डर हैं सामने। 2 स्कोर इस ससना में हासिल किए हैं। ओवर कंप्लीट हुआ। 16 ओवर खत्म हो चुके हैं और 140 स्कोर, अच्छा स्कोर कर लिया इस वक्त बेल्जियम ने। शुरू में ये लग रहा था कि शायद बहुत तेजी से विकेट गिर रहे हैं। So the score here is 140 for 4 wickets after 16 overs. 142, I've just been corrected. And Zishan to bowl. Quite a challenging shot there, but it's gone for a single at a bye. And I think you have to practice these types of shots because we haven't seen too many of the reverse sweeps. So it's nice to see. Zishan comes in, and that's stopped partially by the fielder at cover, and he definitely stayed 4 there, but spray on his hand after that shot. That was hit quite hard. One of the challenges of cricket is the injuries you ascertain. That ball, when it's hit at that speed, over the years has had quite an impact on several people's hands, I can imagine. And as you can see from my fellow commentator today, Fielding, as he was fielding, and you'll see in the interviews as well, we wish him a speedy and healthy recovery. But another wide, which is really sad because they must have bowled 4 overs in wides now, minimum. And from bowling 20 overs, they've ended up bowling 24 overs. So discipline is key here. Rizwan is the bowler. I think he should park that shot. He's tried it 3 times now, and unfortunately he hasn't connected. I always think it's best to hit through the V. Mid on, mid off, alright, hit through the V. And I know 2020 has got some brilliant, but if you've tried it 3 times now, you should really park that shot and focus on what your key shots are. बिल्कुल ऐसा ही करना चाहिए। जब एक दफ़ा कामयाब नहीं हुए, 2 दफ़ा नहीं हुए, तीसरी दफ़ा नहीं हुए, तो अपने माइंडसेट को चेंज करना चाहिए। 103 है मेरा 11 का इस वक्त स्कोर। 17 ओवर मुकम्मल हो चुके हैं, 5 विकेट उनके गिर चुके हैं। They've just hit another 6. Mark was hit for another 6 straight in the center. मुसलसल दे और भरपूर शॉट खेला है, फील्डर के ऊपर से गेंद, पंजाबी में कहते हैं चकानी दे के निकल गया, क्योंकि वहां बम्प हुआ बॉल, अनइवन बाउंस था और एकदम बॉल उठ गया, जिसका अंदाजा फील्डर और गेंद उनके ऊपर से गुजरती हुई बाउंड्री लाइन पार कर गई। 4 रन हासिल किए हैं बेल्जियम के इस बैट्समैन ने अपनी टीम के लिए। अच्छा शॉट खेला था, थोड़ा सा क्रॉस पिच था, लेकिन शॉट स्ट्रेट खेला। But except that shows you how uneven the outfield is, because that bumped and it nearly took his head off. Alright, so I appreciate the slang, alright, but I think that was definitely the right strategy. Otherwise, that could have been quite a nasty shiner on his body if he'd stayed in line with that. So another 2 runs to deep square leg. 2 स्कोर हासिल किए हैं मजीद
स्ट्राइक लाइक पे 155 16 ओवर मुकम्मल हो चुके हैं, 4 ओवर का खेल बाकी है, 155 स्कोर हो चुका है। ओ मिस फील्ड हुई बैट अपना फील्डर से, और इस सस्ना में 3 स्कोर हासिल किए 74 स्कोर के लिए। कितना कॉन्फिडेंट तरीके से उन्होंने स्कोर हासिल किया है, उनको कितना एतमाद है फील्डर्स पे कि ये हमें आउट नहीं करेंगे। वो फील्डर भी उनके एतमाद पर बिल्कुल पूरे उतरे हैं कि उन्होंने वाकई उनको आउट नहीं किया और 3 स्कोर मुकम्मल करने दिए। एक दफा फिर उन्होंने लेट कट किया है इसको, ये किसको बन पाएगा इस वक्त, फील्डर चूंकि मौजूद। और फिर दूसरे रन के लिए कोशिश की, लेकिन और बैट्समैन तो रुक गए थे, लेकिन कीपर ने उनको स्कोर दिया, और फिर लेकिन बैट्समैन को कुछ पता नहीं है कि क्या हुआ।
कोई स्कोर नहीं, और स्कोर नहीं बना था लेकिन ओवर थ्रो का स्कोर अब लेने में कामयाब हो गए। लगता है फील्डर जो है वो नाराज थे कि आपने स्कोर, और फिर एक दफा दो ओवर थ्रो के स्कोर उन्होंने हासिल किए हैं, पहले कोई स्कोर बना नहीं था। ओवर थ्रो हुआ, एक स्कोर लिया, दोबारा फिर ओवर थ्रो हुआ, फिर दूसरा स्कोर लिया। दो स्कोर मुकम्मल किए बैट्समैन ने बेल्जियम की टीम के लिए। अच्छा शॉट मिड ऑन लॉन्ग ऑफ की तरफ, दो स्कोर हासिल किए हैं। फाखर ने यहाँ 50 ऑफ किया है, फाखर ने अपने जाती स्कोर में। मैल लेमन वर्सेस इंग्लैंड का जो मैच इस वक्त खेला जा रहा है, दूसरी ग्राउंड में 121 रन बनाए हैं मैल। आखिरी ओवर का खेल चल रहा है, 6 विकेट का नुकसान उठाया है मैल लेमन ने। इवन 7वीं विकेट डाउन हुई है वहां पे मैल लेमन की, और 121 रन जो है उन्होंने स्कोर किए हैं। एक ओवर का खेल बाकी है मैल लेमन का, और 165 स्कोर बेल्जियम का यहाँ पे है। So the score here for the Belgium team is 165 for 4 wickets after 18 overs. Just a quick heads up and an update on the other match. Umair have scored 121 for loss 6 wickets in 19 overs. So I think that's going to be a very close match. And first ball here is a wide. The bowler is Arsa as he bowls in, and I think that will be deemed another wide, and it is. Bowling here from the bowling from the pavilion end is Arsa as he bowls in. So bowling in as he bowls, and that is the third wide of the over, but he must have just clipped the batsman because the umpire did not know he's given a wide now. So 3 out of the first 4 deliveries here have been wides, and this must be the 25th over they're bowling now, Mike Sub, I think. हाँ जी, इसका अंदाजा अभी मुझे तो नहीं कितने वाइड्स बॉल हुए हैं, अभी हम स्कोर चेक कर लेते हैं, लेकिन काफी वाइड बॉल हो चुके हैं यहाँ। एक और वाइड बॉल हासिल किया है, डिलीवर किया है बॉलर ने। 5 वाइड एक ओवर में, अब देखते हैं मजीद कितने होते हैं। और रिजवान आए हैं कैप्टन ऑफ द टीम बॉलर के पास, और को कह रहे हैं कि हम पर तरस का ज्यादा हो गया है, और बॉलर एक दफा फिर
अंदाज में से 28 स्कोर वाइट बॉल के हैं और 14 स्कोर जो है वो बाय के हैं, जो विकेट कीपर ने अपनी मेहरबानी की। इंग्लैंड और मैरलेमन का आखिरी ओवर का खेल चल रहा है। हाँ जी, आखिरी ओवर का खेल इंग्लैंड और मैरलेमन की दरमियान। बड़ा शॉट खेलने गए थे, कामयाब नहीं हुए, 1 रन हासिल किया है और साथ ही नो बॉल का इशारा अंपायर का और फ्री हिट मिली है। ये जब से हम देखी है फ्री हिट हमारे सामने ये हुई है। अब देखते हैं बैट्समैन इस पे इसके लिए क्या फायदा हासिल कर पाता है कि ये नहीं। वाइड बॉल और फ्री हिट स्टिल देयर। फ्री हिट जो है वो बिल्कुल अपनी जगह पे मौजूद है। देखते हैं, लेकिन कोई फायदा हासिल नहीं कर पाए। पूरी शॉट खेलना चाहते थे, बॉल की लाइन में नहीं आए, बल्ला कहीं और चला गया और खुद पांव की पोजीशन कहीं और थी और बॉल विकेट कीपर के पास चला गया। तीनों ही बच गए। दो बॉल बीट कर दिए हैं इस बॉलर ने 5 वाइड फेंकने के बाद। ओवर मुकम्मल हुआ। बेल्जियम आखिरी ओवर का खेल बाकी है और अमेर 11 ने 134 रन किए हैं। 20 ओवर मुकम्मल हो चुके हैं। 8 विकेट के नुकसान पर उन्होंने 134 रन 135 रन का टारगेट दिया है यूके को। आखिरी ओवर की पहली बॉल मिस की है। So for our English viewers, the score for Amir 11 was 134 for 8 in 20 overs. Quite a vociferous appeal from Nadeem there behind the wicket, but the umpire remained calm and quietly signalled it wide. So the bowler next to him is Nadeem, yeah. And I think that's another beautiful shot there. Good ball for 4. And it has gone for 4. Coming back and works up, I said to you anything over 100 is going to be a tough score. What are your thoughts? 134 runs, is it gettable? हाँ, मैं बिल्कुल आपसे एग्री करता हूँ क्योंकि जो विकेट इस वक्त खेल रहा है वो काफी बैट्समैन के लिए मुश्किल है। इतना स्कोर, इतना टारगेट जो है वो इतना आसान नहीं होगा यूके के लिए, क्योंकि दूसरे तरफ आप देखें कि बॉलर भी, उनकी बॉलिंग साइड भी जो है वो मैरलेमन की काफी स्ट्रॉन्ग भी उनकी अच्छी है। तो इट मींस कि अगर उन्होंने 134 स्कोर किया है तो ये फील्डिंग और बॉलिंग के हिसाब से तकरीबन 150 से का टारगेट उनको ध्यान में रखना चाहिए। उस हिसाब से अगर वो खेलेंगे तो फिर ही वो फील्डिंग और बॉलिंग का सामना कर पाएंगे सही तरह।
बहरहाल कुछ नहीं कहा जा सकता, दोनों टीम में स्ट्रॉन्ग प्लेयर्स हैं और वो मैंने आपको पहले ही कहा कि कोई भी एक प्लेयर जो है वो मैच का पासा पलटने के लिए एबिलिटी रखता है। 22 rights. और बाहर निकल के खेलना चाहते थे लेकिन वापस नहीं पहुंच पाए, कीपर पहले पहुंच गए और आखिरी ओवर की चौथी गेंद पे आउट हो चुके हैं फाखिर। ठंड कुछ बढ़ गई है यहाँ पे, काफी बादल, आज सारा दिन गहरे बादल छाए रहे हैं, धूप कोई खास नहीं आज, और मॉइस्चर रहा। पिच काफी जो है अनइवन रही, कभी फास्ट हो जाती हैं, कभी जो है वो ब्रेक दे रही हैं, कुछ समझ नहीं आ रहा बैट्समैन को और बॉल। So Barak Saab, the match here, as far as Belgium and Sweden is concerned, looks to be coming to the end of the first innings. This is the final over, the final 20th over, and with the score now at 80, we believe Belgium are in a very strong position. And there was a single there, but the striker at the non-striking end, wasn't too interested, and he taken his gloves off. I think he wants to give the new batsman a chance to try and have a go. Ball, that's why. So bowls. Oh, that was close. That was a wide and a missed extra run as well. So you can see the keeper swapped after 10 overs and probably hasn't kept regularly. And he was standing 2 feet from the wickets when he missed that ball. So that brings the conclusion to the match. The score is 183 after 20 overs, and the Belgium team coming out now, having played really, really well.
नाजरीन, हम थोड़ी देर के बाद दोबारा हाजिर होंगे। यहाँ पे कुछ वक्फा है पानी का, दूसरी इनिंग का। तो इंशाल्लाह ताला हम मिलते हैं ब्रेक के बाद। अल्लाह हाफिज।
वेलकम। यहाँ अभी आपको दिखा रहे हैं कि मैच शुरू होने वाला है। दूसरी इनिंग स्वीडन के बैट्समैन क्रीज पर मौजूद हैं। बॉलर ताहिर अहमद हैं बॉलर। आए, बॉल क्रॉस किया, शॉर्ट पिच बॉल थी, दफाई अंदाज में खेले, बैकफुट पे जाके किसी से नहीं कर पाए। 184 का टारगेट दिया है बेल्जियम ने, काफी बड़ा टारगेट रखा है स्वीडन के लिए। देखते हैं कहां तक अचीव करने में कामयाब होते हैं या नहीं। ताहिर एक दफा फिर, ओ माय गॉड, ऑफ स्टंप से बाहर पिच हुआ बॉल और फर्स्ट स्लिप में खड़े हुए फील्डर के सर के ऊपर लगता हुआ थर्ड मैन की पोजीशन पे गया। स्कोर का इजाफा कर पाए हैं गालबन। काफी ऊंची रही बॉल, वरना ये काफी डरी थी जिस तरह ये सर पे लगी है। फील्डर ताहिर एक दफा फिर आई, बॉल की और की तरफ इसको खेला, फाइन कट किया है। फील्डर ने गेंद फील्ड की, एक स्कोर हासिल किया है इस दौरान। 11 ने फजल को गालबन आउट करके पब्लिक ने वापस तोड़ दिया है। ताहिर बीट हुए हैं बैट्समैन, अच्छी बॉल थी। फजल अहमद आउट हुए हैं इंग्लैंड यूके टीम की तरफ से। पहली विकेट गंवाई है यूके ने अंपायर 11 के खिलाफ। बाहर भरपूर कवर ड्राइव, 4 रन, एक अच्छा शॉट, गुड लेंथ पे बॉल थी, कदमों का इस्तेमाल किया और पूरा शॉट खेलकर 4 रन हासिल किए हैं अपनी टीम के लिए, स्विट्जरलैंड के लिए और स्वीडन के लिए, सॉरी। मोहतात अंदाज से खेले इस बॉल को, किसी रन का इजाफा नहीं कर पाए। एक ओवर का खेल मुकम्मल हो चुका है, 6 रन हासिल किए हैं इस ओवर में। ताहिर थे बॉलर, बगैर किसी नुकसान के।
दूसरे ओवर की पहली बॉल कवर की जानब खेला, किसी स्कोर का इजाफा नहीं कर पाए। एक दफा फिर मोहतात अंदाज से खेला, किसी स्कोर का इजाफा नहीं कर सके। उठा हुआ शॉट ओवर द कवर, देखते हैं 4 रन होते हैं कि नहीं, लेकिन फील्डर रोकने में कामयाब, हासिल करना चाहते थे लेकिन कामयाब नहीं हुए। एक ही स्कोर हासिल किया। बैकफुट पे जाके दिफाई अंदाज में इसको खेला, बॉलर ने किसी स्कोर का इजाफा नहीं हो सका। कवर पे खेलना चाहते थे, बल्ले के अंदरूनी किनारे से लगती हुई मिड विकेट, शॉर्ट मिड विकेट पे बॉल आया। 2 ओवर का खेल मुकम्मल हो चुका है, 7 रन, 1 रन सिर्फ हासिल कर पाए हैं इस ओवर में। काफी महंगा ओवर साबित हुआ है स्वीडन के लिए। ताहिर अपना स्पेल जारी रखते हुए बॉलिंग एंड पे, बॉलिंग के लिए ताहिर तैयार आए, अंपायर को क्रॉस किया, बॉल की शॉर्ट पे डिलीवरी से खेला ताहिर, बॉलर ने खुद ही फील्ड की, किसी स्कोर का इजाफा नहीं हुआ। अच्छी बॉलिंग का मुजाहिरा बेल्जियम की जानब से, बैट्समैन को बिल्कुल मौका नहीं दे रहे शॉट खेलने का और ना ही सिंगल स्कोर लेने का। अच्छी फील्ड प्लेसिंग, और इसके साथ ही काफी शॉर्ट पिच डिलीवरी, वाइड बॉल का इशारा अंपायर की तरफ से।
एक अच्छा शॉट, अच्छा प्लेस किया शॉर्ट पिच बॉल को और एक स्कोर हासिल किया अपनी टीम के लिए। अब यहाँ हमारे पास कुछ इंडिया के प्लेयर आए हैं। ये 2 साल के बाद इस टूर्नामेंट में हिस्सा ले रहे हैं। 2 साल हमने इनको बहुत सबकी दिली ख्वाहिश थी कि इंडिया की टीम दोबारा वापस आए और इन्होंने आके सबके लिए खुशी ही दी है सबको। और मैं इनसे पूछना चाहूँगा इनके मैचेस के दौरान मैचेस जो हैं वो कितने मैच इन्होंने खेले और कितने इन्होंने जीते हैं। माशाल्लाह आज भी ये मैच खेल के आए हैं और वो जीत के आए हैं। अभी थोड़ी देर के बाद इनका मैच यहाँ पे होना है, तो मैं उससे कहूँगा कि अपना तारुफ करवाएं और प्लीज़ ज़रा थोड़ा सा बताएं अपने मैचेस के बारे में। मेरा नाम मुनीब जलूद है। मेरा नाम मुनीब जलूद है और मैं ऑस्ट्रेलिया ए के लिए खेलता हूँ। तो हमारी टीम ने अभी तक 2 मैचेस खेल लिए हैं। पहला मैच हमारा आयरलैंड के साथ था। फर्स्ट करके हमने टारगेट सेट किया अबाउट 130 का। उसमें हमने आयरलैंड को 100 तक रिस्ट्रिक्ट किया 15 ओवर्स में। और हमारा दूसरा मैच आज हुआ AMJ 11। उसमें भी हमने पहले बैटिंग की और हमने बनाया 137। तो AMJ ने बैटिंग करते हुए हमने उनको ऑल आउट कर लिया 111 के स्कोर पे। जज़ाकल्लाह, बहुत शुक्रिया आपका। काफ़ी खुशी हुई आपकी टीमों को यहाँ पे देख के और उम्मीद करते हैं कि आप जो लास्ट टाइम आपने फाइनल बदकिस्मती से अनफॉर्चुनेटली आपने हारा था उसको ज़रूर वापस लेंगे आप। ऑलराइट, एंजॉय योरसेल्फ, थैंक यू वेरी मच टू हियर। एक अच्छा शॉट फाइनल लेग की जानब, 4 रन हासिल किए हैं स्वीडन की बैट्समैन ने और इस 4 रन के इजाफे से 15 15 का स्कोर हो गया है। 3 ओवर, चौथा ओवर इस वक्त तीसरा 5वां ओवर, सॉरी 5वां ओवर जारी है इस वक्त बेल्जियम की तरफ से। व्हाइट बॉल, काफी बार था ऑफ स्टंप से इसको खेलना चाहते थे बैट्समैन पॉइंट की जानब, लेकिन कामयाब नहीं है। कुमार का चारा व्हाइट बॉल है। 184 रन का टारगेट दिया है बेल्जियम की टीम ने स्वीडन की टीम को, और इसको फाइन कट करना चाहते थे लेकिन कामयाब नहीं हुए। 135 रन का टारगेट दिया है अमेर 11 ने यूके की टीम को। फजल अहमद ओपनर आउट होकर पब्लिक वापस जा चुके हैं। ओवर टू महमूद साहब। Mubarak Sab. Just took a timely break here just to give you an idea of the viewers. We've been going here it's the very early start of the morning, and it was nice just to pop out to our local Waitrose and get a couple of the crew here. So in comes Holes. Nice shot to a backward point, and it's picked up quite well, so he restricts him just to 1 run. So the weather has improved. There is still a bit of nip in the air, and the ball is doing a little bit. But I feel with 180 on the board, the Belgium team have posted a formidable total on the scoreboard. Having said that, that was a good shot. He moved across to the leg stump, to the offside, and smashed it through mid-wicket for 4 runs. We've just also been told that in response to the Amir score, Fazal is already out.
beautiful shot through mid wicket, typical 2020 shot, and it's gone for 4 runs. और एक और विकेट का नुकसान, खलीक बाबा जो काफी सेटल बैट्समैन आउट छोड़कर वापस जा रहे हैं यूके की टीम की तरफ से, 2 विकेट और इंग्लैंड की टीम की तरफ से, और 2 विकेट का नुकसान। एक दफा फिर और 12 रन दिए हैं इस वक्त मेयर 11 ने। 4 ओवर का खेल वहां मुकम्मल हुआ है, 5वां 2 विकेट गिरा चुके हैं मेयर 11। और महमूद साहब मेरी तरफ देख रहे हैं कि जो हम डिस्कस कर रहे थे कि ये मैच इतना आसान नहीं होगा इंग्लैंड की टीम को मेयर 11 के खिलाफ, और वही बात जो है वो धीरे धीरे सामने आ रही है कि 4 ओवर्स में सिर्फ 12 रन दिए और 2 विकेट उन्होंने गिरा दिए हैं, और कुछ विकेट फाजिल अहमद और खलीक जो जस्ट बिफोर मैच उन्होंने हाफ सेंचुरीज की हैं और बड़े सेट बैट्समैन थे। थ्रू आउट उनकी परफॉर्मेंस बड़ी अच्छी जा रही थी। क्या कहेंगे मोहम्मद साहब? I said to you, a score over 100 is going to be hard to get. The reason why I've got most of the hair on my head and I've got these grey hairs is having played through that on those grounds for many, many years. The pitch is very variable. This is a much better pitch here on the left-hand side. The pitch on the we played on it 3 weeks ago in the UK competition, and I noticed then some of the balls were staying very low, some of the balls were staying quite high, and it was a it's like a normal club pitch here. There is no real customers, and as a result, it's expected you will get variable bounce. But in any of the club matches that we normally play in, you know exactly what you're going to get, where the ball is going to pitch, and you get very, very good pitches here in the UK. But we're restricted because today, as I said, is Saturday. It is most busiest day of the week for club matches. It's very hard to get hold of club grounds. So in comes a Belgian bowler. He bowls, and another leg side wide. जज़ाकल्लाह महमूद साहब। और बोल्ड कर दिया है इस बॉल पे उन्होंने। अच्छा खेल रहे थे ये यंग बॉय, अच्छे स्ट्रोक इसने खेले हैं इस लास्ट ओवर में। अरसलान है इनका नाम। चीनी पालो और इसके साथ ही जो है वो चाय नजर आई है हमें यहाँ पे।
ताहिर, अच्छी बॉलिंग का मुजाहिरा ताहिर की तरफ से। ओवर मुकम्मल किया है 5वां और स्कोर है इस वक्त 26। An update for our English viewers. Um, the England A team is playing Omera 11. Omera 11 scored 133, and in response to that, England are 33 for the loss of 2 wickets in 7 overs. Both Khalik and Fazal are out, but it looks like Zishan and Kasim Mahmood are now beginning to start. खड़े हुए थे, तकरीबन 30 गज के करीब भाग के आए और उन्होंने कोई गलती नहीं की, आउट किया, कैच लेकर अपनी टीम के लिए एक विकेट हासिल की और स्वीडन की टीम को एक नुकसान उठाना पड़ा। So far in a day and a half of commentary that we've provided for you, our viewers, I've got to say that's one of the best catches I've seen. He had to run a minimum of 20 meters, and running in and taking that catch quite low down, really well. Beautiful catch from Tahir, who's also one of the opening bowlers. So another wide ball delivered, and because they ran the extra as well, it was 5. So a lovely from Clark Saab from Ryan Pakistan, showing us the match being televised here. He's just sent us an image via the internet of the match being. So thank you again to our viewers from Rabwa who are watching this match on the internet. Jazakallah.
So a well bowled delivery there, right into the block hole, and all it was hit was for a single. जज़ाकल्लाह इखलाक साहब, आपका मैसेज फिर मिला और पिक्चर्स भी आपकी मिल गई। आप कंटिन्यूसली हमारे इस टूर्नामेंट को एंजॉय कर रहे हैं, आपके साथ साथ और भी काफ़ी लोग जो है वो हमें देख रहे हैं। अगर वो हमें रिस्पांस करना चाहें, मैसेज करना चाहें तो नंबर नोट कर लें प्लीज़। ट्विटर पर भी हमें ज्वाइन कर सकते हैं, लेकिन आपकी सहूलत के लिए मोबाइल फ़ोन भी आपको हम व्हाट्सएप के लिए दे सकते हैं। आप मैसेज कर सकते हैं उसके ऊपर 0044782818 0346 0044782818 0346। जज़ाकल्लाह। छः ओवर 32 का टोटल स्कोर है इस वक्त। आसम से बाहर हुए हैं, ना सिर्फ बैट्समैन बीट हुए हैं बल्कि कीपर भी सही तरह कलेक्ट नहीं कर पाए बॉल को। और एक इजाफा हुआ है इस बॉल पे। ऑस्ट्रेलियन टीम के कैप्टन यहाँ मौजूद हैं। मैं ममूद साहब से गुजारिश करता हूँ कि आप उनसे कुछ सवालात करें। Assalamualaikum. My name is Mahmoud Rizan. Along with Mubarak Ahmed Saab, we're giving commentary for all the matches, which are now being televised across the globe. What is your name, please? None. So I formally welcomed you, but I should have actually said good day sport as well. Yeah. So what part of Australia are you from? Sydney. Sydney. All right. So obviously, the standard of cricket is exceptionally high in Sydney. And what level do you play at? We actually play for our local grades. Like we live in Blacktown, so we call that Blacktown grade. So we play for A grade in Blacktown. And were you part of the team that came here that was played in the final against Canada 2 years ago? Yes, I was. I was part of the team, yeah. And it was pretty well final, and we made it to the final and lost for 6. And we still remember that game. It was a bit dark and yeah, unlucky. But last couple of years we didn't come. But inshallah, this time we brought two teams, and we'll try our best to make it to the final and take the cup home. Fantastic. So tell me this: how has the tournament been for you so far? It started the same as 2012, as we started the first game we lost against Germany. And same thing now with the team. Our main team has lost one game against, I think, the USA. And our second team actually been really good. We have won 2 games in row. Like we only play 2 games and we have won 2. But inshallah, the team has won the other game as well today. So fantastic. So you've lost 1 and you've won 2. Yeah, we actually got 2 teams, and our Australia team has lost 1 and won 1, and Australian B team haven't lost any game. They won 2 games. Fantastic. So 4 points altogether. That's right. so they have 4 points altogether. And thank you for our viewers for letting us know about the quality of another 4 there from the Swedish players. In terms of, I specifically remember you had a very good opening left-hand batsman. Is he with you this year?
No, unfortunately, he's not with us this year for some Junaid Abro. Oh, Junaid Abro. Yeah, Another left-hander is, the last Aziz. six he had, the last six against the Mitch Aziz. I can't Yeah, miss that Aziz, yeah, he was on last ball. on last ball. Very excited. Yeah, nah, you're right. Yeah, so yeah, unfortunately, he's got a job, a new one, so he couldn't make it. He got selected for the team as well again, and he's still playing good, and he's actually better than before. But Not with you. Aziz not with us either. Yeah, so we have actually three of our main players has Umar Aziz. Umar Aziz. Yeah, he was Umar Aziz. He was main bowler. Yeah, 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 he's a good bowler. Yeah. because he's my neighbor in Pakistan. In Oh, is Lahore. he? Oh, okay. That's why I know him very well. Okay. He's very hard hitter as well. He's hard hitter and he's a good bowler. Change the game any Okay. ball. So it's Yeah. like this. So yeah, unfortunately, a couple of our actually captain who's been training us with making us train for the last couple of months. He's a very good player and he played really high grade in Australia, and he couldn't make it for a visa reason. He got rejected his visa because yeah. Oh, That's we're very sorry that he's not here with us. I'd like to pass you over now to मुबारक साहब. वो आपको थोड़े सवाल पूछेंगे उर्दू में, अगर ठीक है, हैं? मुबारक साहब, आप अभी बस यहाँ हमारे पास ऑस्ट्रेलियन प्लेयर्स दफ़ा फिर हमारे कमेंट्री बॉक्स में मौजूद हैं। जैसा कि मैंने आपको पहले भी बताया कि हमारे काफ़ी सारे लोग जो हैं वो, बल्कि 90% जो हमें रिस्पांस मिल रहा था लास्ट 2 ईयर से, उसमें ज़्यादातर लोग जो हैं वो ख्वाहिश ज़ाहिर करते थे कि हमारे ऑस्ट्रेलियन प्लेयर्स जो हैं वो बहुत मिस कर रहे हैं यहाँ पे इस टूर्नामेंट में। तो इस साल अल्लाह के फजल से वो दोबारा एक टीम के साथ नहीं, हमारा गिला दूर किया है, 2 टीमों के साथ आए हैं। तो उन्होंने कहा कि चलें हम 2 टीमें लेके जाते हैं ताकि कुछ ना कुछ जो है वो प्रीवियस जो हमने शमूलियत नहीं की उसको रिकवर कर सकें। तो मुझे बहुत खुशी, और 5 प्लेयर यहाँ पे मौजूद हैं यहाँ हमारे कमेंट्री बॉक्स में। तो मैं पसंद करूँगा अगर वो अपने जज्बात का इजहार करें कि जिस तरह हमने उनको मिस किया है, हमने उनको जैसे चाहते थे कि वो टीम के अंदर आए, तो यहाँ पे टूर्नामेंट में आए, तो हम भी उनसे सुनना चाहते कि उन्होंने भी इसी तरह हमें मिस किया और कि नहीं। तो अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम वसीम अहमद है और ऑस्ट्रेलिया से ताल्लुक़ है, और मैं फिर एक बार एजाज़ हमें मिला है यूके टूर्नामेंट में। और मैंने लास्ट टाइम 2012 में मैं यहाँ पर फर्स्ट टाइम शिरकत की थी, और जिसकी यादें हमें फिर 2 साल तक हमें उन्होंने तंग किया, और 2 साल बाद हमारा ड्रीम्स कम ट्रू हुए हैं कि हम यहाँ पर फिर आए हैं। और अब जब से हम 2012 से इधर से होकर गए हैं, हम क्रिकेट खेलते सिर्फ इस टूर्नामेंट से, ताकि हम अपने आप को अपडेट रख सकें और इस टूर्नामेंट में आके पार्टिसिपेट कर सकें। और अमीर साहब की सबके लिए दुआएं और सलाम, अमीर साहब का सबके लिए दुआ और सलाम। और यूके से हमें बहुत ज़्यादा मोहब्बतें मिली थी, अभी तक 2012 से याद है जब हम लोग यहाँ पर आए थे, और इतना प्यार मिला, सिर्फ क्रिकेट नहीं, वो प्यार हमें यहाँ पर दोबारा खींचता था, और अल्लाह ताला का बेहद शुक्र है कि हम फिर यहाँ पर मौजूद हैं। बहुत बहुत आपका आप के जज्बात हमारे पूरे जो यहाँ पे देखने वाले हैं, जमात अहमदिया के मेंबर्स और दूसरे भी उनके पास पहुँचे हैं। और मैं कोशिश करता हूँ कि आपकी जो टीम के कैप्टन हैं उनके भी हम थोड़े से जो व्यूज़ हैं वो ले सकें। तो मैं उनसे गुजारिश करूँगा कि वो भी आप अगर कुछ कह लें तो। जी, अस्सलाम वालेकुम। अच्छा, हमारे जो अभी अनीसुर रहमान मेरा नाम है, और मैं इस दफ़ा अपनी टीम को लीड कर रहा हूँ, ऑस्ट्रेलिया की ए टीम को। और हमारा जो मेन रीज़न था यहाँ आने का, एक तो हज़रत साहब से मुलाकात थी, और वो हमारी एक्चुअली हो गई है, और उसमें ये है कि समझें कि हमारी टिकट पूरी हो गई है, ठीक है। और वो हमें बहुत साहब से मिले, मुसाफा हुआ, उनका हाथ चूमा। तो क्रिकेट तो हमारे लिए सेकेंडरी है। अब इंशाल्लाह हम बहुत मज़ा आ रहा है, 2 मैच खेले, हम जीते हैं, और अभी हमारा तीसरा मैच होगा स्विट्ज़रलैंड के साथ। तो हमारा यही गोल है कि हम इंशाल्लाह आज ही ये मैच जीतें
और रिलैक्स करें और रात को आराम से सोएं कि हम क्वार्टर फाइनल में मेक कर दिया हमने। तो बस हमें बहुत खुशी है और बहुत टीमें यहाँ पर आई हुई हैं और एक एटमॉस्फेयर बना हुआ है और जो हर मुल्क की शर्टें रंग बिरंगी और मज़ा आ रहा है, कमेंटेटर बैठे हुए हैं यहाँ पर और एक पूरा इंटरनेशनल समझ लें माहौल बना हुआ है कि ये जैसे हम इंटरनेशनल लेवल पे खेल रहे हैं और एक बस हमारी यही दुआ है कि हम बस हर साल आएँ इस टूर्नामेंट में और ये कामयाब होता रहे और बड़ा से बड़ा होता रहे। एक दिन हम जो यहाँ का इंटरनेशनल ग्राउंड है उसमें भी खेलें। तो बस यही था और बस देखें हम अगर फाइनल तक मेक करते हैं कि नहीं। और जो लास्ट का विजिट था आपका यहाँ पे इस टूर्नामेंट में शमूलियत का, वो उसमें तो आपके काफ़ी अच्छे प्लेयर्स शामिल हुए थे। कुछ उनमें मिस लग रहे हैं मुझे, कुछ उनमें नज़र नहीं आ रहे उनमें से प्लेयर्स जो काफ़ी अच्छे परफॉर्मेंस उन्होंने दी थी। तो क्या वजह बनी, वो कुछ वीज़ा प्रॉब्लम थी या कुछ उनकी अपनी जॉब्स की वजह से? हाँ जी, बिल्कुल ये इनकी बात दुरुस्त है। अपना हमारे एक तो जुनैद अब्रो साहब जो हमारे लास्ट बैट्समैन थे लेफ्ट हैंडेड और एक उमर जी मैन ऑफ द सीरीज भी रहे, हाईएस्ट स्कोरर भी रहे और जी उन्होंने और एक हम साहब जो हमारे मेन बॉलर थे, एक वो उनकी तो खैर अपनी कुछ पर्सनल सर्कमस्टेंसेस थी, इस बार नहीं आ सके और एक हमद हमारे मेन बॉलर थे, हमद अहमद, उनके यहाँ मैच चला कल बेटा हुआ है तो वो इस वजह से भी नहीं आ सके और एक हमारे कैप्टन जो कि हमें वहाँ खिलाते हैं और वो काफ़ी हाई लेवल ऑस्ट्रेलिया में खेलते हैं और वीज़ा रिजेक्ट हो गया समहाउ और दो प्लेयर हमारे और भी have the best so inshallah they are doing good and they have अब सॉरी उर्दू में बात करता हूँ अंग्रेजी की आदत पड़ी हुई है अच्छा वो यूएई के खिलाफ था मैच और उन्होंने यूएई वालों ने 79 बनाए थे 80 स्कोर और हमारी टीम ने 6-7 ओवर में मेरे ख्याल में कंप्लीट कर लिए नॉट आउट। तो उनकी काफ़ी अच्छी मतलब बैटिंग की उन्होंने ना दोनों प्लेयर ने। तो बस अब देखते हैं क्या होता है। जज़ाकल्लाह। एक और विकेट यहाँ हासिल की है बेल्जियम की टीम ने और यहाँ हमारे ऑस्ट्रेलियन वो मौजूद हैं और मैं दावत दूंगा मुनीब अहमद जन्नूद को और उनसे गुजारिश करूंगा कि वो भी शेयर करें अपनी फीलिंग्स यहाँ पे आने की। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम मुनीब जन्नूद है। अभी जैसे हमारे कैप्टन साहब ने कह दिया कि हमारा एक जो मेन पर्पस होता है इधर वो हजूर अनवर से मुलाकात का ही होता है कि क्रिकेट सेकेंडरी होती है एंड एवरीथिंग एल्स इज़ अ बोनस। सो हमारी मुलाकात हो गई है और माशाल्लाह से हमें बहुत अच्छा लग रहा है। दिस इज़ माय फर्स्ट टाइम हियर। तो सारा जो इधर माहौल है मरकज़ में, जो इधर सारी सबका रवैया, सब ने जो हॉस्पिटैलिटी दिखाई है उससे हम लोग बहुत मुतमईन हैं। इधर खाना पीना भी माशाल्लाह से बहुत शानदार रहा है, तो वो भी हमने बहुत इंजॉय किया है। लेकिन क्रिकेट का भी इधर बहुत ही मज़ा आ रहा है, बहुत ही अच्छा है। ग्राउंड्स भी बहुत अच्छे हैं माशाल्लाह से। कुछ विकेट्स हैं जो कि अप एंड डाउन है, लेकिन वो टर्फ की विकेट में ऐसा ही होता है, तो बहुत बहुत मज़ा आ रहा है। So, as I explained to a lot of these are not your regular club grounds. And the reason why Saturday is most busiest day of the week. It's the day of the week, and so you have three major leagues here playing. You have the Middlesex County League, you have the Home Counties League, and you have the Surrey Championship League. So most of those grounds will have covers. You'll have a proper bounce, but you know we try as we can. But tell me this: it's your first visit to London, all right? You met Hazur last night. What was the feeling and your memory of that? Our feeling was amazing. I mean, we were sitting there waiting for Hazur, and we were just, counting down the seconds, just waiting for Hazur, and it seemed like forever that, we'd been waiting. But when he did come, we got the opportunity to take pictures with him. We shook his hand, and yeah,
our Sir Saab introduced us. So it was an amazing feeling. It was an amazing opportunity, and it's because of this tournament that we've had this opportunity to actually sit with Hazur, meet him. Um, we've been lucky enough to offer prayer behind him as well, so which has been a really good experience. We were at the Khutbah Jummah and we were in the rows, so just sitting there listening to him and being so close. Because Australia being so far away, we don't really get the opportunity. So it's been amazing, and we're forever grateful for this opportunity. So we are absolutely delighted you've come here, and we wish you all the best, and our prayers are with you, and for a safe journey, and specifically because you're from over 24 hours away, and a lot of our viewers will not know how difficult it is, the cost, the time, and we're grateful to you. So thank you very, very much for spending some time with us, and we wish you the best. Okay? Jazakallah. जज़ाकल्लाह। ये थे जुनैद साहब। हम हमाद साहब को भी मुबारक देते हैं उनके बेटे के लिए, और उमर अजीज़ साहब को हम काफ़ी मिस कर रहे हैं यहाँ पे। इनकी टीम जो है वो उनमें हम उनको भी देखना चाहते थे। इंशाल्लाह हम उम्मीद रखते हैं कि नेक्स्ट टाइम जब भी ऑस्ट्रेलिया की टीम यहाँ पे आएगी तो ये दोनों प्लेयर भी, अब्रो साहब भी ज़रूर इनमें शामिल होंगे। और एक और विकेट हासिल की है यहाँ पे स्वीडन का एक और प्लेयर आउट होकर पब्लिक में वापस जा रहा है। बेल्जियम के एक और कामयाबी हासिल हुई है। तो यहाँ पे एक और प्लेयर हैं, देखते हैं उनके क्या। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह। मेरा नाम रफ़ीक अहमद साकिब है, मैं ऑस्ट्रेलिया से आया हूँ। मेरा ये दूसरा टूर है। पहले मैं 2012 में आया था, उसके बाद ऑस्ट्रेलिया तो यहाँ पे नहीं आई। अब तकरीबन 3 साल के बाद यहाँ पे आए हैं दोबारा, और यहाँ पे बहुत मज़ा आ रहा है, क्योंकि मुझे दफ़ा की जो यादें हैं वो भूलती नहीं हैं। और सबसे मेन चीज़ थी वो हुजूर के साथ मुलाकात थी। हम कल हुजूर के साथ हमारी मुलाकात हुई थी। हमें सबसे ज़्यादा मौका मिला कि हम हुजूर का वेट करते रहे उधर बैठ के, और वो अमेजिंग था। जज़ाकल्लाह। आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आप यहाँ पे हमारे कमेंट्री बॉक्स में आए और अपने ख्यालात का इज़हार किया। हम आपको तहे दिल से वेलकम करते हैं यहाँ पे, और आपके लिए दुआ गो है कि आपकी टीम अच्छा खेले, और इस दफ़ा आप इतनी दूर से आए हैं और ट्रॉफी लेके जाएं। जज़ाकल्लाह बहुत बहुत। वेरी मच, जज़ाकल्लाह। अल्लाह हाफिज़। फिफ्टी फोर है आयरलैंड अपना 11 के खिलाफ इंग्लैंड का स्कोर 2 विकेट के नुकसान पर 10 ओवर का खेल वहां मुकम्मल हो चुका है। यहाँ पे स्वीडन का स्कोर है 50, और 10 ओवर का खेल यहाँ भी मुकम्मल हो चुका है। 11वां ओवर स्टार्ट है दोनों टीमों के लिए, दोनों ग्राउंड्स में, और बड़े करीब करीब स्कोर भी हैं। 54 वहाँ पे, 52 यहाँ पे। तो 4 आउट हैं स्वीडिश प्लेयर्स, स्वीडन के प्लेयर, और और एक भरपूर शॉट इस वक्त स्ट्रोक खेलने
को मिला है, बहुत ही उम्दा मिडल ऑफ द बैट, थोड़ा सा बैकफुट पे जाकर इसको गुड लेंथ पे लिया और पूरा शॉट खेला, 6 रन के लिए गेंद बाउंड्री लाइन से बाहर। बावन है स्कोर इस वक्त। स्वीडन का 4 खिलाड़ी आउट हो चुके हैं, 10 ओवर मुकम्मल, 11वां ओवर खेल रहा है। एक दफा फिर फील्डर हैं गेंद के सामने, ताहिर अच्छे फील्डर नहीं बेल्जियम के। नहीं नहीं अच्छी बॉल मिडल स्टंप पर पड़ी, थोड़ी सी शॉर्ट पिच थी, समझ नहीं पाए बैट्समैन उसको, क्रॉस खेलना चाहते थे, कामयाब नहीं हुए, किसी रन का इजाफा नहीं हुआ। फिर वही बॉल टारगेट की, बॉलर ने नहीं समझ पाया गेंद को और ओवर मुकम्मल हुआ 11वां। 59 स्कोर है, 4 खिलाड़ियों के नुकसान पर स्वीडन का। आगे गए फ्रंट फुट पर, झारहाना स्ट्रोक खेलना चाहते थे, कामयाब नहीं हुए, बीट हुए, कीपर ने कोशिश की आउट करने की लेकिन वो भी कामयाब नहीं हुए, दोनों सेटिस्फाइड। तेजी से 1 रन मुकम्मल किया है स्वीडन की टीम ने। अच्छा गैप शॉट, फील्डर मौजूद नहीं था, खेला है 2 रन के लिए फाइन लेग की तरफ। 2 स्कोर बने हैं, 2 स्कोर है। लेग स्टंप पर पड़ा हुआ बॉल दिफाई अंदाज से खेल दिया है, शॉट मिड विकेट। मुबारक है बॉलर आए बॉल की, और अच्छी बॉल, बैट्समैन बिल्कुल नहीं समझ पाया इसको। ओवर मुकम्मल हुआ मुबारक का, 12 ओवर का खेल मुकम्मल हो चुका है।
स्कोर 64 स्कोर है इस वक्त स्वीडन का, और 4 खिलाड़ी आउट हो चुके हैं यहाँ पे स्वीडन के। इंग्लैंड का स्कोर इस वक्त 11 के खिलाफ 52 है, और 2 खिलाड़ी उनके आउट हैं। अभी तक 3 खिलाड़ी आउट हो चुके हैं, एक खिलाड़ी आउट हुआ है, और 11 ओवर का खेल मुकम्मल हुआ है वहां पे। अच्छा शॉट, लेकिन एक स्कोर बन पाएगा। अच्छी थ्रो फील्डर की, सीधा कीपर के हाथ में। थोड़ा सा ऑफ स्टंप पे बॉल था, कवर के ऊपर से खेलना चाहते थे, कामयाब नहीं हुए। और इस दफा कामयाब हुए, क्रॉस बॉल से खेला, खतरनाक साबित हो सकता था। दोनों फील्डरों के दरमियान में बॉल गिरी, और गेंद, अंपायर का इशारा देखना पड़ेगा, 6 है या 4 है। 4 रन का इशारा है अंपायर का, और 4 रन हासिल किए स्वीडन के इस प्लेयर ने। थोड़ा सा क्रॉस बैट से खेल रहे हैं, ये जड़ी लपेटे जा जाती है बाहर, और फिर डाउन द ट्रैक बाहर निकले इस बॉल को खेलने के लिए। वाइट इशारा नहीं, ये कीपर की मिसफील्ड हुई कीपर से, और 4 स्कोर हासिल किए। और एक दफा फिर भरपूर खेला उन्होंने, बहुत ही आला, पूरा 6 रन के लिए उठा के गेंद को बाहर फेंक दिया। थोड़ा सा शॉर्ट पिच बॉल था, जो कि क्रॉस खेलते हैं थोड़ा सा, तो उन्होंने और एक बार फिर उन्होंने ताहिर फील्डर, और बहुत तेज फील्डर है, लेकिन नहीं रोक पाए इस गेंद को। 4 रन हासिल किए, स्टेट शॉट था बिल्कुल। एक दफा फिर, और फुल टॉस बॉल थी, स्टिक हुई, वेस्ट हाइट थी। अंपायर का इशारा देखना पड़ेगा। ओवर मुकम्मल हुआ है।
So the teams for Switzerland, Australia have arrived and are going through their preliminary match warm-ups. For those of you who might be interested in a match which is taking place between um, England and Umair, at the wicket at the moment we have Zishan Anjum, and he is batting with Zishan Nasir, and he's batting with Khizr Ahmed. And we'll give you an update on the score as soon as we can. And that's a top edge there. That should go to the boundary, and it does. So Sweden have recovered quite well, considering in the first match Sweden only scored. They've already scored 87 from the first 13 overs, and that just gives you an idea that experience and through perseverance, they've maintained their momentum and now are improving in this tournament, doubling their first match score already. And again, good cricket, a single taken, which was very good. जाकल्ला महमूद साहब, यहाँ दूसरे मैच में मैर 11 के खिलाफ इंग्लैंड की टीम ने 60 रन किए हैं। 3 खिलाड़ियों के आउट हो चुके हैं। 13 ओवर का खेल वहां मुकम्मल हुआ है और फिर एक क्रॉस बैट से इसको खेलना चाहते थे। ऑफ स्टंप पे पड़ा हुआ बॉल बल्ले के ऊपर से गुजर गया। मुलाकात जाके गिरी, मुमकिन ढूंढी जा सके। काफी लंबा छे था, इसके 8 रन मिलने चाहिए एक्चुअली, जितना लंबा ये मारा, और बॉल भी घूमी है। इसका फाइन जो है वो बैट्समैन को होना चाहिए। 2 स्कोर देकर एक्स्ट्रा 5 पॉइंट से ले लिए जाए। अच्छा स्ट्रोक खेला है बैट्समैन ने, बिल्कुल मिडल ऑफ द बैट बॉल आई और उन्होंने कोई गलती नहीं की। फेवरेट शॉट है मुझे लगता है, ये फास्ट बैट से ही खेलते हैं और पूरा 6 मारा उन्होंने भरपूर तरीके से। बहुत ही अच्छी क्रिकेट देखने को मिली। 70 स्कोर है इंग्लैंड का इस वक्त। 14 ओवर का खेल वहां मुकम्मल हो चुका है। 3 विकेट हो चुके हैं। फजल अहमद, खलीक अहमद और कैसर महमूद। उठता हुआ शॉट,
team needs 60 of the last 6 overs. 98 का स्कोर स्वीडन का, और 14 ओवर मुकम्मल हो चुके हैं। 6 ओवर का खेल बाकी है और काफ़ी स्ट्रगल करनी पड़ेगी स्वीडन के प्लेयर्स को। इस किस्म के लंबे शॉट हर ओवर में 3-4 खेलने पड़ेंगे। एक दफा फिर उठता हुआ शॉट फील्डर गेट के नीचे, दोनों टकरा गए आपस में, कॉल नहीं की। फिर एक दफा कैच ड्रॉप, किसी ने भी कॉल नहीं, मैं कुछ भी नहीं कहा और सीधा टकरा गए जाके एक दूसरे के साथ। और आउट हो गए हैं जो स्वीडन के प्लेयर अच्छे शॉट्स खेल रहे थे, आउट होकर वापस जा रहे हैं। काफी इन्होंने अच्छे शॉट्स दिए हैं अपना स्वीडन टीम को। और इस वक्त हमारे साथ स्विट्जरलैंड के कैप्टन मैनेजर यहाँ कमेंट्री बॉक्स में आए हैं। हम जानना चाहेंगे कि अभी तक हम उनको रिकवर नहीं कर सके क्योंकि जहां हमारा कैमरा है सेटअप है वहां पे उनका मैच अभी कोई हुआ नहीं है। आफ्टर दिस मैच इंशाल्लाह वो उनका मैच हम दिखाएंगे। तो हम जानना चाहेंगे उनसे कि उनके जो पहले मैचेस हुए हैं और वो यहाँ पे आए हैं, हजूर से मिले हैं, तमाम उनके जो ख्यालात हैं हम जानना चाहेंगे ताकि हमारे व्यूअर्स को वो बता सकें। अपना तारफ पहले प्लीज़ करवा दीजिएगा। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह। मेरा नाम बिशारत अहमद अनीस है। मैं स्विट्ज़रलैंड की जो हमारी टीम है क्रिकेट की उसको ऑर्गेनाइज़ करता हूँ, मैनेजर के तौर पे खिदमत बजा ला रहा हूँ। वैसे मैं रीजनल अमीर हूँ अपने इलाके का। तो इस दफ़ा हमारी जो टीम है वो 19 नफूस पर है, 19 नफूस हैं उसमें, जिनमें हमारे मरबी सिलसिला जो है नबील अहमद साहब वो भी आए हैं साथ और मेरे काफिला के तौर पर। और अलग फल से हमने 2 मैच अभी तक 3 मैच खेले हैं जिनमें से 2 हम जीते हैं और अभी थोड़ी देर के बाद हमारा आखिरी मैच होगा। आपने ख़ास तौर पर जो हजूर से मुतल्लिक मुलाकात का पूछा था, ज़ाहिर है ये सवाल किए जाते हैं लेकिन इनके जवाबात हम एमडी जो हैं, जो हजूर के साथ मुलाकात है वो हमेशा की तरह वो ऐसे ही होता है जैसे बस यही एक मुलाकात थी जो ज़िंदगी में किसी से हुई है, उससे अच्छी और बेहतर मुलाकात कोई नहीं। हमारी मुलाकात हुई, हर खिलाड़ी जो है उस मुलाकात के बाद एक अजीब सी कैफियत से गुजरा है और मैं समझता हूँ खैर अहमदी गुजरता है जब हजूर से मुलाकात होती है। तो इस लिहाज से हम बहुत खुश हैं, अल्लाह ताला का एहसान है कि हमें वो मौका देता है। इस लिहाज से भी कि हजूर अनवर से मुलाकात का शरफ हो जाता है। वैसे हमने इस दफ़ा पहले तो हमें पता चला था कि शायद हजूर यहाँ नहीं है, तो लेकिन खुदा के फजल से हमारी टीम उसी तरह मोटिवेटेड थी कि हमने वहाँ जाना है, बल्कि इस दफ़ा निस्बतन बेहतर टीम और ज़्यादा लोगों के साथ हम आए हैं, क्योंकि हम समझते हैं कि हजूर की मौजूदगी ज़ाहिर है हमारे लिए सब कुछ है, लेकिन हजूर के नाम पर एक अगर टूर्नामेंट हो रहा है तो हजूर उसमें मौजूद नहीं भी हैं तो हमारे लिए वो कैसे ही अहमियत रखता है। हम अल्लाह के फजल से इस लिहाज से करके हैं, लेकिन हमारी खुशकिस्मती है कि अब हजूर भी यहाँ थे और हमारी मुलाकात भी हो गई। जज़ाकुमुल्लाह। कैसा महसूस कर रहे हैं आप? पहले टूर्नामेंट्स की बनिस्बत आपके प्लेयर्स ज़्यादा ऑर्गेनाइज्ड हैं और ज़्यादा बेहतर आप प्लेयर्स को तैयार करके लेके आए हैं,
क्या आप बताना चाहेंगे? इससे पहले कि आप इसका जवाब दें, मैं थोड़ा सा अपडेट दे दूं कि मेयर 11 के खिलाफ यूके इंग्लैंड की टीम जो है 16 ओवर उनके मुकम्मल हो चुके हैं इंग्लैंड के मेयर 11 के, और 87 रन स्कोर किए हैं। 3 विकेट अभी तक उनके गिर चुके हैं। 16 ओवर्स मुकम्मल हो चुके हैं, 4 ओवर्स का खेल मुकम्मल है, 17 ओवर चल रहा है वहाँ पे, और 87 रन उन्होंने बनाए हैं। तो मैं वसीम साहब से पूछता हूँ। जी, जैसा कि आपने अभी पूछा है, ये बहरहाल आप समझते हैं कि यूरोप में और ख़ास तौर पर क्रिकेट जो है ये बहुत बड़ा उस लिहाज से खेल नहीं है, लेकिन अब इसके बावजूद अब निस्बतन बहुत ज़्यादा क्रिकेट हो रही है। वहाँ बाकायदा लीग हो रही है जिसकी 16 टीमें हैं, लेकिन हमारी जो पार्टिसिपेट वो निस्बतन कम है, खुसूसन नौजवानों में इस तरफ बिल्कुल रुझान नहीं है। आप समझते हैं कि फुटबॉल वगैरह की तरफ तो बहुत रुझान है हमारे नौजवानों का, लेकिन लेकिन हज़ूर अनवर अल्लाह ताला बिन नसर अजीज़ ने जब ये टूर्नामेंट आपकी हदायत के मुताबिक शुरू हुआ, तो फिर उस लिहाज से अब नौजवानों में भी मोटिवेशन आई है। इस दफ़ा ख़ास तौर पर एज ए मैनेजर मैंने हमारी जो मीटिंग हुई थी उसमें कहा था, जो हमारी कमेटी की मीटिंग है, कि आपने कोशिश करनी है, हमने कोशिश करनी है इस दफ़ा कि हम नौजवानों को आगे लेके आएँ, फिर पूरे वो स्विट्ज़रलैंड से नौजवान आएँ। तो इस लिहाज से मुझे खुशी है, आप देखेंगे भी कि पिछले सालों की निस्बत इस दफ़ा हमारे नौजवान टीम में ज़्यादा हैं और अल्लाह के फजल से बेहतर खेल रहे हैं। मोहम्मद साहब, आप अगर कुछ पूछना चाहें प्लीज़। जी, अस्सलाम वालेकुम बशार साहब। तो बशार साहब, मैंने पूछना था कि आप जो पिचेस खेलते हैं ज़्यूरिख या बाज़ल में या जहाँ भी हैं स्विट्ज़रलैंड में, वो पिचेस कैसी हैं? वो टर्फ की पिचेस हैं कि या मैटिंग या सीमेंट की? ये बड़ा दिलचस्प सवाल आपने पूछा है। जो हमारे यहाँ वहाँ अब तो बड़ा बेहतर हो गई है। जो 6-7 साल पहले वहाँ जो क्रिकेट थी उसमें तो एक बहुत ही, जिसको कहते हैं बेहूदे कहा जा सकता है, कि ऐसा टैप ऐसा बिछा के उसको विकेटें अक्सर ऐसी ही थी। लेकिन अब चंद मसलन बाज़ल का आपने नाम लिया, वहाँ अच्छी एक विकेट बन गई है। नीचे उन्होंने वो काफ़ी अच्छा उसको तैयार करके ऊपर उसमें बाकायदा उन्होंने मैट डाल दिया है। इसी तरह विंटरथूर में अच्छी विकेट है, वहाँ हमारी टीम के ज़्यादा अफराद जो हैं वहीं खेलते हैं। इसी तरह अब 3-4 और जगह हैं, जेनेवा है, जेनफ है, या मेरा ख्याल है कि हाँ अभी वो बैरन वाली टीम जो है उन्होंने भी अच्छी विकेट तैयार कर ली है। तो अब निस्बतन विकेट्स बेहतर हो गई हैं, लेकिन यहाँ का जो क्रिकेट का एक माहौल है, मैं समझता हूँ इसको उससे कुछ निस्बत नहीं है। आप लोग ज़्यादातर इस्तेमाल करते हैं कि आप लोग ट्रेनर्स इस्तेमाल करते हैं? आप लोग स्पाइक्स इस्तेमाल करते हैं के लिए या ट्रेनर्स? वहाँ जो ये जो प्रॉपर यहाँ जैसे इस्तेमाल करते हैं, इसकी वहाँ इजाज़त ही नहीं है हमें, क्योंकि वो विकेट्स की वजह से भी मैट वगैरह बिछा होता है, तो उस वजह से वो इजाज़त ही नहीं देते। तो जज़ाकल्लाह आपका आने का बशार साहब, बहुत बहुत खुशी हुई है। और मुझे एक आखिरी सवाल मैंने पूछना था कि कौन सा लड़का है आपकी टीम में जो अभी टॉप स्कोर कर रहा है टीम में? इस वक्त हमारा उसामा महमूद बहुत अच्छी बैटिंग की है उसने मुख्तलिफ मैचों में, और भी बाद नौजवान अच्छा खेले हैं, लेकिन इस वक्त मैं समझता हूँ टॉप पे शायद वो जा रहा है। जज़ाकल्लाह अहसन जज़ा बशार साहब, और आपको बहुत खुशी है यह, और इंशाल्लाह आपको कामयाब होंगे अगले मैच में। अस्सलाम वालेकुम। So for our English viewers, that was the manager of the. As we see another massive six being hit, Sweden really have turned this round. I mean, from scoring 44 in the last match, they are already at 119 in the 16th over, and whilst they may not win this match, they have definitely a really good fight in comparison to the 48 of the first match. So the Belgium captain again gives away 4 byes, and it's 2 only. We've had a bit of rain here today, so normally that would have gone for 4 byes.
So a very precarious and dangerous situation for the UK team. It looks like they've lost another wicket, and they needed 50 in the last 4 overs, which was a big task. But I've just seen a massive six being hit by drop the catch now. and the catch. Oh, the catch was dropped. I've just been told, and it's not a six. So two really intriguing matches going on here at the moment. So the score here is 123 in 17 overs, 180. तीन ओवर बाकी हैं, 60 स्कोर चाहिए जीतने के लिए। 184 का टारगेट। महफूज और आउट होने का खतरा, लेकिन स्कोर मुकम्मल किए 2। इस वक्त बड़ा ही दिलचस्प मुकाबले में दाखिल हो चुकी हैं दोनों टीमें, इंग्लैंड और मैर 11। 93 स्कोर पे 3 खिलाड़ी आउट हैं। 17 ओवर मुकम्मल हो चुके हैं। 3 ओवर्स में 41 स्कोर चाहिए 3 ओवर में। और एक मरतबा फिर उठता हुआ शॉट, फील्डर थ्रू द गेंद। 2 स्कोर इस हसना में मुकम्मल किए हैं। ताहिर है फील्डर, काफी तेज फील्डर है, काफी दूर से भाग के आए। उन्होंने गेंद को और बाउंड लाइन से जाने से रोका और जो है वो स्कोर सेव किया अपनी टीम के लिए। काफी ठंड बढ़ चुकी है। मैच दोनों जो है बहुत दिलचस्प कंडीशन में दाखिल हो चुके हैं। दोनों टीम में स्वीडन की टीम भी काफी स्ट्रगल कर रही है, लंबी शॉटें खेल रही है। वहां पे इंग्लैंड की टीम स्ट्रगल कर रही है। एक कैच ड्रॉप हुआ है वहां पे इंग्लैंड की टीम का बैट्समैन का। काफी सिचुएशन इस वक्त टाइट है दोनों मैचेस में। Mubarak Sabit, for me, it's I think Umair deserve credit for the way they've performed. And whilst the UK team put up a good, strong fight, getting 40 runs in 3 overs is not no matter what cricket you're playing. So as Muzambar comes into bowl, a beautiful shot there, which is run. And back in this match live here, Sweden have done really, really well. I've really been impressed when you look at their first innings score in the first match. They only got 48, and they've done incredibly well. I think that's the beauty of this game. उम्दा बैटिंग का मुजाहरा यहाँ पे स्वीडन की टीम की तरफ से। उनके बैट्समैन बड़े ही अच्छे और मुख्तार अंदाज अच्छी बैटिंग का मुजाहरा कर रहे हैं। लंबी हिटिंग भी कर रहे हैं और सिंगल डबल को भी नहीं मिस कर रहे। जहां मौका मिलता है पूरा स्कोर लेते हैं, किसी स्कोर को मिस नहीं करते। और एक और विकेट का नुकसान इंग्लैंड की टीम को। मैर 11 ने एक और विकेट धर ली।
कॉट बिहाइंड आउट हुए हैं खालिद जफर कैप्टन टीम के। लेग बॉय का स्कोर और एक और स्कोर बनने का। काफी दिलचस्प मुकाबला हो रहा है और इंग्लैंड की टीम का, और यहाँ स्वीडन और बेल्जियम की टीम के दरमियान काफी टफ मुकाबला चल रहा है। देखते हैं कौन सी टीम। फील्डिंग काफी टाइट रखी हुई है इस वक्त बेल्जियम की टीम ने। स्कोर है 137 स्कोर। 20वां ओवर चल रहा है, आखिरी ओवर, और 4 स्कोर हासिल किए हैं यूके इंग्लैंड की टीम ने वहां। और 6 के लिए खेला है, पूरा छक्का मारा है फरीद ने। 14 बॉल। और बड़ा ही दिलचस्प महमूद साहब, जैसा कि हम बार बार ये कहते थे कि ये मैच इंग्लैंड की टीम के लिए इतना आसान नहीं होगा। दिलचस्प मरले में दाखिल, विकेट गिर चुके हैं इस वक्त इंग्लैंड की टीम के, और उनको इस वक्त 14 बॉलों पे 34 स्कोर दरकार हैं ये मैच जीतने के लिए। और बड़ा ही इंटरेस्टिंग मैच होता चला जा रहा है वहां पे। अब देखते हैं कि मेयर 11 की किस्मत किस हद तक साथ देती है, क्योंकि T20 में महमूद साहब कभी भी ये नहीं कह सकते। आप एक है वो मैच सिचुएशन चेंज हो जाती है। एक आपका जो हिटर है, लॉन्ग हिटर बैट्समैन, वो मैच को चेंज कर देता है, और एक लूज बॉल आ सकती है। तो देखते हैं क्या होता है। दोनों टीमें, दोनों मैचेस बहुत ही दिलचस्प मरहले में दाखिल हो चुकी हैं। ओवर टू महमूद साहब। Barak Saab, I had the pleasure of facing Musambar last 2 weeks ago, and he bowled an incredibly good length and line, and he bowls with pace, and so for me, I think at this stage, Umair, I predicted that as soon as they scored 130, as I said to you, that pitch is not easy. And it's वहाँ पे देखें, 2 स्कोर हासिल किए हैं इस मिसफील्ड की वजह से। and that pitch is not easy, all right, and so the strike rate is going to be pretty phenomenal for them to catch up. But it's not the end of the tournament for either side. It was just a case of who's going to be first or second, and so still keep upbeat, whoever wins or loses, and then learn from whatever they learned from that match and make sure they improve on it in the next subsequent matches. जज़ाकल्लाह बहुत साहब। हमने पहले भी इस बात का काफी जिक्र किया था कि लगता ऐसे है कि, और ये उठा हुआ शॉट, कोशिश करेंगे गेंद को कैच करने के लिए, अपनी हुए यहाँ पे बेल्जियम के फील्डर। एक स्कोर हासिल किया है इस शॉट पे। एक 104 स्कोर इंग्लैंड की टीम ने बना लिए हैं, और अब 19वां ओवर वहां चल रहा है।
और यहाँ पे आउट हो गए हैं। गली के ऊपर फील्डर ने अच्छा कैच लिया भाग के। और 4 रन हासिल कर लिए हैं इस बॉल पे। फाइनल लेग की जानिब अच्छा शॉट हासिल करेंगे। एक ही स्कोर बना। So the Swedish score is 144 with 2 balls left. I think they've done very, very well in this match. They've come back from having scored only 48 in the previous match. Both teams gave it their best, but Belgium were ultimately the better side. That's a beautiful shot for 6. Although it's still tossed down leg side, it still needs to be dispatched. And it's ended up, the ball has ended up on the second ground there. अभी नाज़रीन आपको बताते चलेंगे इंग्लैंड और यूके अपना मेर 11 के खिलाफ जो आपस में मैच हो रहा है उसमें 7 बॉलों पे 19 स्कोर चाहिए उनको जीतने के लिए। इंग्लैंड को 7 बॉल 19 स्कोर चाहिए इंग्लैंड को ये मैच जीतने के लिए। काफी मुश्किल नजर आ रहा है। महमूद साहब आप को मैं ज्वाइन करता हूँ आपके साथ। क्या कहेंगे आप? ये इस वक्त एक स्कोर उन्होंने हासिल किया और रन आउट का खतरा था। उन्होंने दूसरा स्कोर भी हासिल कर लिया और थ्रो के ऊपर 2 स्कोर हासिल किए हैं। 15 स्कोर बाकी 2 स्कोर 6 बालों पर जो है वो 17 स्कोर चाहिए। First of all, let me congratulate Belgium. As far as the match on the far pitch is concerned, before it even started, and I repeat to you now, I thought 130 was too much. I thought we'd given away too many runs. Umair are a solid side. They've got 2 of my former opening batsmen when I was captain of the England A team, Mohsin and Kurum, opened batting for me in my England A team when I was captain. So I know the calibre of those people there. Lake is a phenomenal player. Muzamma is a phenomenal player. So you've got 2 really good sides. And for me, as far as I predicted when they scored 134, I thought it was too much, and that Umair would win. जज़ाकल्लाह। देखते हैं आखिरी 6 बॉल रहते हैं यहाँ पे। इंग्लैंड के मैर 11 मैच हो रहा है। आखिरी 6 बॉल हैं। यहाँ पे बेल्जियम की टीम ने ये फतह हासिल की है स्वीडन की टीम के 148 टोटल किया है स्वीडन की टीम ने 20 ओवर में और उनके 6 खिलाड़ी आउट हुए हैं। अजीज हैं गलबन पर आए बॉल के और मिसफील्ड हुई है कीपर से। हासिल किया है अपना इंग्लैंड की टीम के बैट्समैन ने। 16 स्कोर हैं, 5 बॉलें हैं, कुछ भी नहीं कहा जा सकता। काफी टफ मैच है इस वक्त इंग्लैंड और मैर 11 के दरमियान में। बैट्समैन तैयार, बॉलर आए, अंपायर को क्रॉस किया लेकिन रन अप गलत होने की वजह से वापस गालिबन अजीज मिठू
2 लग रहे हैं मुझे मोहम्मद साहब यहाँ से बॉलर, इफ आई एम नॉट रॉन्ग। आए बॉल की और बीट हुए हैं इस बॉल पे, 4 बॉलों पे 16 स्कोर। काफी इंटरेस्टिंग हो गया ये मैच मोहम्मद साहब। So I give you my prediction, and you know, unfortunately, congratulations to Mir, and lessons learned for the team. आए एक दफा फिर अजीज मिड ऑफ की तरफ खेला है, 1 स्कोर ही बन पाएगा। 3 बॉल पे 13 स्कोर, अभी भी मुमकिन, कुछ नहीं कहा जा सकता क्रिकेट में, आप कुछ नहीं कह सकते। अगर 2 6 लगते हैं तो मुमकिन है ये 3 बॉलों पे। और ये देखते वही बात हुई है, और 6 के लिए उन्होंने खेल दिया, छक्का मार दिया इस बॉल पे, और जो है वो 7 स्कोर, 2 बॉलों पे 7 स्कोर। अब देखिए कितना और भी मजेदार हो गया मैच इस 6 के बाद। 2 बॉलों पे 7 स्कोर, 3 बॉलों पे 13 स्कोर था, 6 मारा है अभी उन्होंने, और अब देखते हैं क्या होता है। बहुत ही इंटरेस्टिंग मैच इस वक्त जारी है इंग्लैंड और अमेरिका 11 के दरमियान। 7 runs out of the last 2 balls. Beautiful 6 there over mid-off, and Aziz will have to rethink how he's bowling those deliveries. He bowled well. He'd only been hit for singles throughout the, as you said, it's such a different game that this is really going to go to the wire. बिल्कुल मोहम्मद, इस ये क्रिकेट है, जब तक मुमकिन है तब तक आप कुछ नहीं कह सकते कि कौन क्या कर जाए। 2 बॉल की गेम है। मैंने आपको पहले बताया था कि ये ऐसे प्लेयर्स में हैं कि वो 1 बॉल पे गेम का, मैच का रुख चेंज कर सकते हैं। और देखिए ये 4 होना चाहिए, और ये 4 हो गया। आखिरी बॉल है और 3 स्कोर चाहिए उनको जीतने के लिए, और 2 जो है वो बहुत ही इंटरेस्टिंग मैच। 10 रन 2 बॉलों पे हासिल किए हैं इंग्लैंड की टीम ने। अब थोड़ी सी फील्डिंग ऊपर ली है अजीज ने। और क्या 3 रन चाहिए, 2 बॉलें बाकी हैं। आउट कर दिया है गलबन, बोल्ड कर दिया है अजीज ने इस बॉल पे। अभी भी मुमकिन है नकल, ये आखिरी बॉल था, और अमेर 11 मबूसा देखें, अमेर 11 ने इंग्लैंड को ये मैच हरा दिया। ये बहुत बड़ा टूर्नामेंट का अपसेट हुआ है, क्योंकि ये देखा जा रहा था इस नजर से कि इंग्लैंड की जो टीम इस वक्त है वो बहुत बैलेंस है, यंगस्टर्स में डाले गए थे। हाँ जी, तो वो काफ़ी अपनी परफॉर्मेंस दिखाएंगे, लेकिन उसके बिल्कुल अपोजिट हुआ है। तो ममू साहब कुछ आपने ख्याल इज़हार करें। I think it wasn't an upset. You know, both teams have got good players, and you have to respect that. You know, the likes of Lake,
as captain, Aziz as their all-rounder, Farid as a good left-hand batsman, and the two batsmen who opened for me, Kurum and Mohsin, are now both playing for Umair. So these guys have got good credentials, they're good cricketers, and similarly the UK have got good cricketers, but literally off the last ball, Umair have defeated them by 2 runs. And my congratulations to the Umair side, and my consolations to the UK side. But it's not such a bad thing because the two teams are so evenly balanced that a result of that nature was always expected. It was always going to be a close match. I predict once they'd scored that many, I felt the UK had given them too many runs from too many bad deliveries, and hopefully, inshallah, they'll learn to progress well for the tournament. So we have another match about to begin on this surface. We have the Switzerland team with the Australian team warming up on the left hand side of the ground. So still lots and lots of cricket to come here. I did say to you it's a festival of cricket to be enjoyed by everyone. And the great that match there, even though it was so close and so tense, every single player shook each other's hands in recognition of the exceptional talent on both sides. So to all of our viewers worldwide, we'd like to take a 10-minute break and then we'll resume commentary and coverage of the next match, which is Switzerland versus Australia, which will inshallah begin in the next 10 minutes. As the two teams now are doing their final preparations, I see the Australian team in a huddle and I see the Swiss team just warming up. So inshallah we'll be back within 10 minutes and I'll speak to you then. Assalamu alaikum.